Rukmaniji. And now over to you, Hemant sir, for the session, Governance Practices of Rajasthan. This session is about best governance practices of Rajasthan. And I have with me 3 young IAS officers of Rajasthan who have made name for themselves in this cadre, as well as the best practices they have shown, exceptional capabilities they have shown, has brought laurel not only to them at the national level as well as to the state of Rajasthan. Today we will be starting the session with Mr. Sihad, and he will be talking about his contribution in promotion of sports. What a better day to start the day with this presentation, because you must be knowing that India is also creating waves at the Asian Games, and they have created a sort of history by surpassing their best ever medal tally. And in Rajasthan, basically we have government has taken up sports in a very big way, and for last 2 years, two state level rural Olympics as well as urban Olympic games have taken place, and participation to the tune of around 50 lakh people of all walk and straight, starting from young as 14 years, 15-year students to senior citizen like of age of 65, 70, they have participated and with enthusiasm, and that has given us a way forward, and some of the better players have come out of that. They are being shortlisted, and that is being bringing Rajasthan forward at the national level as well as the international level. So I'll be asking Siddharth to make his presentation. We will keep it this way. They will be making presentation in around. Will be open for question answer session for 3 minutes, so that we wrap up this session the time allotted to us, that is by 10:45. Thank you. A very good morning to all of you. As Hemant sir pointed out, I am speaking to you in the afterglow of the wonderful achievement that Indian athletes have put on display at the Asian Games. In fact, yesterday evening itself, I was looking at some of the highlights in some of the events, especially events like dressage, decathlon, which haven't traditionally been something that Indian athletes have been known for. I'll be talking to you about how Khelo India scheme has really taken roots in different parts of Rajasthan, and how some of the components of the scheme have been mushroomed and taken forward by us in Churu. A little background about Churu. Churu has grown to become the sports nursery of Rajasthan. Although, as you can see, that if you look at NFHS 5 data, there are a lot of HDI indicators that where Churu lags the state of Rajasthan. Indicators like literacy, institutional births, even with respect to stunting and nourishment parameters related to children. Also, in terms of, if you look at per capita income, it does not feature in the top 10 districts of Rajasthan. But the story that has been scripted by the district in terms of its achievements when it comes to the sporting arena is definitely worthy of emulation. I'll just give a snapshot of the achievements so far. To look at the Khelo India Youth Games, firstly in terms of participation, Churu has the second highest number of athletes who have participated in these prestigious games after Jaipur, and 20% of the medals that have been won by Rajasthan have been won by athletes hailing from Churu. And this tally gets better. This presentation was prepared in 2021-22 during the presentation for Khelo India Games.
But after that, two more editions of Khelo India Youth Games have happened, where our tallies, in fact, have surpassed our previous achievements. If you look at female participation, because this is an area when it comes to female participation in workforce, in fact, a lot of economists have also dwelled on this, that if India really has to improve its GDP, then it will have to improve its female participation. The same holds true for sports as well. When it comes to Churu, the participation of females has increased almost by 100%. And not just that, the medals that have been won by female athletes, you looked at the overall medals, that was 20%. Here, the ratio is almost 33%. One third of all the medals that were won by the state, in fact, were won by athletes hailing from Churu. And there are a couple of sports like hockey and handball, where women have in fact outperformed their male parts and continue to do so. Even in other national level events, this is just Khelo India Youth Games. Otherwise, also you can say that the ratio is almost 50%. 35 is to 38. These are the recent Khelo India Youth Games, where you can see earlier the tally was 20%. Now Rajasthan won 8 gold and 9 silver medals, out of which 25% gold and 22% silver medals were won by athletes who came from Churu. In Rural Olympic Games that Sir mentioned, there also our district in both the editions, in 2022 as well as 2023, we were the district with the second highest number of medals. And we'll soon look to, hopefully in the next edition, we'll look to dethrone the top district and achieve that position for ourselves. Now, what lies behind these achievements? There is, of course, infrastructure, but there is also coaching, there is focus on nutrition and well-being, and there is building of a sporting culture in the district. And I'll talk about all of these things one by one. Firstly, about the infrastructure. Infrastructure also, I'll go firstly at the district level, then at the block level, and the Gram Panchayat level, and how quickly those infrastructural facilities have come up. One reason behind all of these facilities coming up in the way that they have has also been the fact that this is something that has been a demand-led growth, because this is fueled by the sporting culture of the district. Therefore, it is being demanded of the public representatives at every level, and therefore this is being not just built but also utilized. So this is our district stadium. This track was completed in 2020. Post the completion of this track, within the same campus, a lot of different facilities have also come up. For example, archery, table tennis center, badminton hall, shooting facilities, and these are all SAI approved centers. These are some of the pictorial snapshots. We are really hopeful of the shooting arena. In fact, in the Asian Games, athletics and shootings have been the two sports that have contributed to the maximum haul of medals. And we are hopeful that with these, at least in the short range shooting, 10 meters, we'll be able to get good haul of medals in the future. The para athlete featured in the bottom right of the screen is Arjun Singh. When this picture was taken, he was in a promising stage. This year, he's won a gold at the international competition that was held in Rome, Italy. So the athletes that we saw in a budding stage have now started to earn laurels for the country. In all of these events, we've also held state level competitions. Now, what has happened at the block level? In 2020, I mentioned we only had a stadium at the district level. Now we have stadiums at all the block levels. And two of these stadiums are in various stages of completion. In fact, larger, the entire stadium complex has been built. We have a new track that has been laid out. It is of international standard. Taranagar, it is almost ready, and also in all the rest of the subdivisions. Also, what has been done is, wherever we have got support from SAI, we have supplemented it through the resources of the district itself. So we have 9 centers which are SAI approved. In addition to those, we have 10 centers which are supported by the district council. So what it does is, it creates a feeding mechanism. So there are some SAI approved centers where coaches of a certain quality, then there are those tier 2 centers, and we have about 200 PTIs. So those PTIs also in turn are trained with these coaches of a certain repute, of a certain standing, and they also get that exposure
And once you have coaches of a certain level, once you marry that with the infrastructure that you are creating, that in turn leads to the kind of achievements that I spoke about in the past. And as you see in the last point, the number of medals that have been won by the trainees from Khelo India approved centers is slightly less than the number of medals that have been won by the other centers. This is the list of those centers. In fact, at serial number 4, you see the volleyball center in Berasar village. It is a sight to see the athletes practicing there, one after the other. One person's creating a volley, the other person's smashing. And in fact, units of the Indian Army also go and train in this little village hamlet because of the quality of athletes who gather there. Similarly, in Kabaddi, Saraswati Munde, I have seen her work, who's a coach there, and she really puts the athletes through the grind. And a result of that, you'll see when I discuss the rural competition column later on. This is the sporting infrastructure in various stages of development. Taranagar, as you can see, is about to be complete. You can see the outline, whereas this is in the bottom right is Rajgarh, and then there are tennis and basketball courts in various areas. This is a Dronacharya Boxing Academy. It's called a Dronacharya Boxing Academy because it is run by a Dronacharya awardee. He was in fact the coach of Mary Kom. He hails from Haryana but decided to come to Rajgarh to set up his center there. That is the Fogat Wrestling Academy. He is an uncle of the famous Fogat sisters of Haryana, who've all won medals in various competitions for the country. This is volleyball and then hockey. This is Loha, the school on the top left. This is a handball team. This is a small hamlet in Ratangarh. The coach here, this is a SAI approved center. The coach previously was a student of the same school, came up the ranks, performed well, and now has become a coach. So people who were sports persons earlier, now a second degree setup has been created. Now they are becoming coaches, and therefore the entire ecosystem is being built. In Jigsana Tal, they have an excellent volleyball team. They finished with a volleyball silver medal this time during the Grameen Olympics. So after block level, it is also important to replicate these facilities at the Gram Panchayat level. Over the last 3 years, we've been able to create such playgrounds in almost 300 schools. We have 304 Gram Panchayats. So we're trying to saturate those facilities in every Gram Panchayat. And these are some of the efforts in different sporting events that we've tried to create. Rural games, as I mentioned, these are some of the games, for example, Kabaddi, Kho-Kho, that have traditionally been played. And if we try to create facilities around these sports, they are more easily adopted by the village populace. In Kabaddi, our team was, Churu athletes were part of the team that won Khelo India Youth Games medal both in 2020 as well as 2022. And we also have a pro Kabaddi League athlete hailing from Churu. This is something that has been a pioneering feature in Churu, to build residence facilities close to or within the stadium so that athletes can stay there and do not have to waste time in commuting and can focus entirely on their training. Testament to the quality of the training as well as to the facilities is the fact that people not just from within the district but from outside the district, also outside the state, have utilized these facilities. And of those who won medals, 20 were hailing from Churu, 23 from outside Churu but from within Rajasthan, and 40 have been won by those who came from other states, who, for example, came from Haryana. And Haryana, you know, has a brilliant sporting infrastructure. We also have people from the armed forces coming to Churu and utilizing our facilities. This is something that we try to focus on nutrition and health. So you all know that you have MDM facilities in schools now. You also have the Bal Gopal Yojana where milk is being provided free of cost. So nutrition is being looked at by the government. Also, we have healthcare facilities that are being provided to children under RBSK. But we also felt that there is a certain knowledge deficit that needs to be bridged. So we came up with a very simple system. This is a UNFPA mandated booklet. We gave it to all students and then a very simple test of very simple things. For example, in the local language, तिरंगा आहार क्या है, विटामिन सी आपको कैसे मिलता है, डीवर्मिंग के क्या फायदे हैं, कैसे होता है, प्रोटीन कैसे मिलता है. And we did this across the board. In all the schools, we didn't make it too heavy by design because we didn't want it to be
sort of an additional load of curriculum, but something that can be easily administered and measured. These were the results. 20% students who had scored less than 50%, and later 80% students improved their score. We also, some students who had done really well and who had been trailblazers in adopting this and also getting other students aware. We awarded them on Women's Day last year and also this year. This is the health checkup under RBSK that was popularization of sports. This is Grameen Olympics. Our district target was 1 lakh. We ended up registering almost 2 lakh sports persons this year. Compared year to year, last year this number was 65,000. So there has been a threefold jump in the number of people who registered themselves for Grameen Olympics. This is my conclusion. Churu, in fact, we are arguing is trying to do something that India is trying to do at a national stage to overcome the deficit it has in HDI indicators, in per capita income, and compete with countries and punch above its weight. I am sure that the example of districts like Churu will infuse the entire country with a spirit and make us a global sporting superpower in the future. Thank you so much. House is open for questions, if any. See, there is some funding that we managed to procure from SAI. So the initial stadium that has been built, we got that funding from SAI. And some of the funds were from budget announcements. So budget announcements are going to funnel money into your district. But what are the priorities that you design for the district? What is the demand that is being generated from the ground is something that you have to look at. When it comes to block level or Gram Panchayat level facilities, those have been built using schemes like Narega and converging funds from other schemes. There are also schemes like, for example, DMFT. We took a conscious decision that 20% of all our DMFT funds have to go into sports. And we convinced all the politicians. In fact, the last meeting that I took, almost 40% of the funds we managed to allocate it to Anganwadis, because we thought that that is the most neglected area. Schools anyways get funding, the community is also more attached, more aware about it, hospitals get funding, but Anganwadis get neglected. And also we try to tell people that sports is something that we need to invest in. So 20% we earmarked for sports. To all these academies we gave some money. So that is how you arrange funds. You'll have to basically be innovative about these things and have multiple sources funding the kind of events that you want to. थैंक यू सिद्धार्थ. अगले जो हमारे प्रेजेंटर हैं मिस्टर जितेंद्र कुमार सोनी, और मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूं कि ये हिंदी साहित्य में भी बहुत बड़ा नाम रखते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाए हुए हैं. इन्होंने काफ़ी इनोवेशंस किए हैं अपने जहाँ जहाँ ये कलेक्टर रहे हैं, और इनका जो रिसेंट जो इन्होंने अपना इनोवेशन किया और जो अपना कंट्रीब्यूशन किया सिलिकोसिस केयर पे, उसके ऊपर ही आज अपना एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं. क्योंकि सिलिकोसिस एक मेजर हेल्थ इशू है, हेल्थ प्रॉब्लम है. राजस्थान क्योंकि एक माइनिंग स्टेट है और यहाँ पे जो माइंस के अंदर और माइंस के बाहर जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जहाँ भी स्टोन कटिंग होती है, वहाँ पे सिलिकोसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. और जो व्यक्ति सिलिकोसिस अफेक्टेड हो जाता है तो उसको क्या केयर मिलनी चाहिए, और उसके लिए राजस्थान हैज़ टेकन ए लीड. उन्होंने हमारे यहाँ पे काफ़ी पहले इसके रूट्स बने, इसके प्रोसीजर्स डेवलप हुए और उसको किस तरह से अगले कदम तक लेके गए हैं, उसके लिए जितेंद्र कुमार सोनी, वेलकम. आप सभी को नमस्कार. सबसे पहले तो मैं वी श्रीनिवास सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब मैं नागौर में कलेक्टर था, ये 2021-22 के दौरान रहा मैं वहाँ, उस वक्त हमने ये सिलिकोसिस पे काम किया था. तो उन्होंने न केवल इस चीज़ के लिए हमें प्रोत्साहन दिया, क्योंकि वो वहाँ प्रोफेशनल रहे हुए थे, वो समझते हैं इस चीज़ को, और उसके पश्चात
इस सिलिकोसिस केयर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पूरी केस स्टडीज हुई, स्टेट गवर्नमेंट को उसकी रिपोर्ट गई। मैं एक छोटा सा वीडियो है 3-4 मिनट का, जो अपने आप में सारी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये समस्या क्यों है, इससे क्या क्या चीजें होती हैं, वो उसके अंदर है। मैं एक बार वीडियो का रिक्वेस्ट करूंगा। 4 मिनट की इस वीडियो के बाद किस तरीके से हमने इस पे काम किया। खानों में पत्थर तोड़ अन्य निर्माण कार्यों के दौरान उड़ने वाली डस्ट जब श्वास के जरिए शरीर में जाती है तो इनमें काम करने वाले मजदूर जाने अनजाने ही सिलिकोसिस रोग की चपेट में आ जाते हैं। धीरे धीरे मरीज के फेफड़े खराब होने लगते हैं, जिससे सिलिकोसिस एक जानलेवा बीमारी बन जाती है। नागौर जिले में सिलिकोसिस मरीजों की संख्या ज्यादा है। सिलिकोसिस पीड़ितों को शीघ्र अनुग्रह राशि देने के साथ अन्य योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए एक नवाचार के तौर पर सिलिकोसिस केयर अभियान चलाया गया। सिलिकोसिस केयर अभियान के प्रथम चरण में माह अगस्त में सिलिकोसिस के विशेष शिविर आयोजित किए गए, जिसमें श्रमिकों की चिकित्सकों द्वारा जांच की गई और सिलिकोसिस पीड़ितों को सिलिकोसिस पेंशन योजना व पालनहार योजना से लाभान्वित किया गया और न्यूट्रिशन पैकेट्स का वितरण भी किया गया। अभियान के द्वितीय चरण में सिलिकोसिस पीड़ितों को अनुग्रह राशि के साथ विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए सिलिकोसिस केयर डेटाबेस तैयार किया गया, जिसके माध्यम से सभी योजनाओं का एकल प्रारूप तैयार किया गया। डेटाबेस में ऑफलाइन एवं ऑनलाइन अनुग्रह राशि से लाभान्वित सभी पीड़ितों का डेटा अपडेट किया गया है। सिलिकोसिस मरीज के टीबी हॉस्पिटल से सर्टिफाइड होते ही सिलिकोसिस केयर फॉर्म में ऑनलाइन एंट्री की जाती है, जिससे मरीज का डेटा सिलिकोसिस केयर डेटाबेस में सेव हो जाता है। इसके उपरांत संबंधित विभागों को ईमेल के माध्यम से डेटा अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता है। खनिज एवं श्रमिक विभाग द्वारा मरीज को दी जाने वाली सहायता राशि शीघ्र ही मरीज के खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। समाज कल्याण विभाग द्वारा मरीज को पेंशन एवं पालनहार योजना से तथा खाद्य सुरक्षा आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद सिलिकोसिस केयर डेटाबेस में योजना से लाभान्वित करने की जानकारी अपडेट की जाती है। सिलिकोसिस केयर प्रोजेक्ट की सफलता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जहां अप्रैल 2019 से पहले जिले में सिर्फ 609 सिलिकोसिस लाभार्थी थे, वहीं अब लाभार्थियों की संख्या 2000 से अधिक हो गई है। इनको दी जाने वाली कुल अनुग्रह राशि भी 7 करोड़ से बढ़कर 38 करोड़ से अधिक हो गई है। क्या पहले भाटे घना खोजा पर काम एक मिस्त्री और घना बंगला बनाया था। जरा था मां कोई टाबर रमता क्यों बाबा क्यों डांसे जरा मैं क्यों बैठ डांसों का या कार्य कौन लगेगा मनो पड़े क्यों नागो ठीक अस्पताल दो नागो ठीक अस्पताल की मैं लाभ रहा दो ही दो मैंने क्यों कहते तो लिख दूं तो लिख दिया तो बाबा टीवी कोने था मैं सैली को दो तो मैंने सर्टिफिकेट बना दे दिया हाथ 8 दिनों में तो नहीं करी कोने रिजा आएगा 3 लाख और काम यह है बराबर आवे माता पर पोता पोते पड़े और सब चीज मैंने मेरे पे आया है। मैंने होगा 15 साल हुआ था तो बोतरा साहब को दो ले ली हरू में तो बोतरा साहब को नरू करी नागौर तो नागौर जोधपुर की प्रमोशन अजमेर की ब्रो ऐसा मान तो पया पर ओटी होनी जना अभी आता है तो खेत भेज 8 बीघा उम्र खेत भेज टावर पड़ी बार मन भाई इतनी लोट मां वाड़ो दे नागौर जाए थे 3 लाख रुपया डॉक्टर मार दे भलो ही दिया धन्यवाद डॉक्टर कलेक्टर साहब ने। और जमीन बिकड़ी एक बाड़ो मकान हुआ था जल्दी 8 बीघा जमीन हमारी बिक चुकी और एक मकान के कपड़ी बंद थे 5 ले ली टूट साकों में। धन्यवाद साहब। राम निवास और दुकान पर बैठा कोई अखबार पढ़ा जल्दी की फांसी 6 करोड़ 6 करोड़ मानो प्रमाण पत्र मिल गो और 15-20 दिन माही मतलब मानवा 2.5 मिल गई और 15 रुपया महीना मतलब फायदो हो और सिलिकोस का रिजल्ट भी मिल गया और पेंशन होगी वहाँ के फायदे है बेगों बेग चेक करो और सिलिकोस फायदे उठाओ। बीमार पड़ गया
जोधपुर जांच कराई बट मन के लाभ मिले वन नागौर कराई सरकारी हॉस्पिटल के भी लाभ मिले। दरअसल क्या है कि जिंदगी में जब तक कोई चीज हमारे सामने नहीं आती है और हम अखबार पढ़ते हैं तो हमें उसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं होता। ये सबके साथ ऐसा होता है। अगर मैं नागौर में जिला कलेक्टर नहीं होता या मैं आईएएस भी नहीं होता और मैं किसी जिले में काम कर रहा होता तो शायद जब तक ये तकलीफ मेरे सामने नहीं आती मैं इसको समझ नहीं पाता। ये जो सिलिकोसिस है, ज्यादातर लोग तो इसको खांसी समझते हैं कि मुझे कई दिनों से लगातार खांसी आ रही है, और जो थोड़े से समझदार होते हैं उनको लगता है कि अब चेक कराएं तो वो टीबी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टीबी होगा। सिलिकोसिस दरअसल आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि यह सैंडस्टोन जो होता है उसकी जब कटाई होती है तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स 0.5 माइक्रोन से लेकर 5 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स हैं, वो सांस के साथ अंदर जाते हैं और हमारे लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनके सबके ऊपर ढक्कन की तरह चिपकते जाते हैं। जिस दिन ये पूरा बंद हो जाता है, लंग्स फैल जाते हैं, वो आदमी कोई काम नहीं कर पाता। और आज भी इस 5G के टाइम में सिलिकोसिस हो जाने के बाद हम उसकी लाइफ के साल बढ़ा सकते हैं, उसको अच्छा न्यूट्रिशन देके, योगा करवा के, वॉक करो तुम मॉर्निंग में, पर हम उसको बचा नहीं सकते हैं। मतलब उसकी जो मृत्यु है वो निश्चित है। इंसान का एक्सीडेंट हो जाए, मृत्यु हो जाए तो किसी तरीके से समझाया जा सकता है, पर जिस इंसान को पता हो कि मैं 6 साल 7 साल के बाद मेरी मौत तय है, वो रोज मरता है थोड़ा थोड़ा करके। और ये सिलिकोसिस इसलिए गंभीर है और हमने इस पे किस तरीके से काम किया, मैं बस 2 मिनट 3 मिनट में अपनी बात कहूंगा। दरअसल क्या है कि सिलिकोसिस का जो पेशेंट है, इसको लाभ देने के लिए 6 डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं। ये लोग या तो माइन के अंदर होते हैं और या फिर पत्थर की जो गढ़ाई करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, उनसे जुड़े लोग होते हैं। तो 2 डिपार्टमेंट तो यही हो गए, माइंस वाले लोग हो गए और लेबर वाले हो गए। फिर ये डॉक्टर के पास जाता है, उससे चेक कराता है, तो चिकित्सा विभाग में मेडिकल एंड हेल्थ इंक्लूड हो गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एडीएम इसका 3 लाख रुपए सैंक्शन करता है, वो इंक्लूड हो गया। फिर इनको गेहूं का लाभ मिलता है तो फूड एंड सिविल सप्लाई इंक्लूड हो गया। इनको पेंशन मिलती है और बच्चों को पालनहार मिलता है तो सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस डिपार्टमेंट वो इंक्लूड हो गया। अब दिक्कत ये आती है कि एक इंसान हॉस्पिटल चला गया, वहां से दवाई ले लिया और उसको 3 लाख रुपए मिले, तो उसको कई बार पता भी नहीं लगता कि मुझे दूसरे इतने डिपार्टमेंट की चीजें मिलने वाली हैं। जब हमने वहां ज्वाइन किया तो हमने इसमें जो एक रिवर्स इंजीनियरिंग इस्तेमाल की कि सबसे पहले हमने ये किया कि कितने लोग हमारे पास अवेलेबल हैं, फिर उनकी फैमिली से पता करके उनके कितने डिपार्टमेंट हैं, इन सबको एक्सेल शीट में डाला। 3 ही चीजें यूज की, एक्सेल शीट यूज की, एक गूगल फॉर्म बनाया और जो वर्ड में एक ईमेल मर्ज ऑप्शन होता है उस तरीके से मैसेजिंग देने के लिए एक सिस्टम बनाया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। बहुत छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल किया, पर इससे हमें कई चीजों का बेनिफिट मिला। पहले की व्यवस्था थी, एक बार पीपीटी चलाएंगे प्लीज, सिर्फ उसमें एक स्लाइड मुझे दिखाना है। पहले क्या होता था कि टीबी वाले के पास गया, अब उसको सब जगह अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है। यानी वो इंसान टीबी हॉस्पिटल में जाके पहले सिलिकोसिस का प्रमाण पत्र ले, उसके बाद वो खुद ही जाए एडीएम साहब के पास, खुद ही जाए फूड सिविल सप्लाई के पास, खुद जाए सोशल जस्टिस के पास, तो उसको लाभ मिलता था। हमने इस चीज को थोड़ा चेंज किया। आगे चलें जरा प्लीज, और आगे और आगे। हाँ, यहां से वो टीबी हॉस्पिटल जाता है, फिर या तो माइनिंग में जाता था या लेबर में जाता था, फिर सोशल जस्टिस में जाता, फिर इसमें जाता। अब हमने इस सिस्टम को चेंज किया, हमने उसके लिए व्यवस्था की कि उसको तो एक ही बार जाना चाहिए, बाकी सारे काम हमारे होने चाहिए। आगे चलिए, आगे। वो सिर्फ टीबी हॉस्पिटल जाएगा और इस डेटाबेस की मदद से जो एक बार सिलिकोसिस का पेशेंट हो गया, हम ही उसको सारे बेनिफिट पहुंचाते हैं। और इस एक्सरसाइज से हमें यह भी पता लगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि 6 साल में 7 करोड़ रुपए ज्वाइन करने से, जब हमने सिलिकोसिस केयर शुरू किया उससे पहले 6 ईयर में 7 करोड़ रुपीस मिले, और 1.5 साल के अंदर जो इनका नंबर है वो 38 करोड़ हो गया। यानी 1.5 साल में हमने 31 करोड़ रुपीस का इनको रिलीफ और दिया। इसी ढंग से बाकी पैरामीटर पे भी हमने काम किया। तो जब भी कोई समस्या आती है तो उसमें 2-3 क्वेश्चन हमेशा सामने आते हैं। पहली बात तो ये है कि समस्या क्यों आ रही है, तो उसका रीजन ये है कि समस्या इसलिए आ रही है कि वहां जो सैंडस्टोन है उसकी कटाई करते हैं, तो उसके भी कुछ प्रिवेंटिव मेथड यूज करने पड़ते हैं। तो हमने इस पे काफी काम किया। बिल्कुल लास्ट वाली स्लाइड पे आ जाइए प्लीज। इसके लिए हमने वेट ड्रिलिंग कंपलसरी की। जो माइंस वाले वेट ड्रिलिंग में क्या होता है कि ये जो उड़ता है, इसके जो आप कटाई देखते हैं तो धुआं टाइप लगता है कि धुआं उड़ रहा है, तो वेट ड्रिलिंग की तो वो क्या है, पानी में घुल के नीचे आ जाता है, तो उस पर जाता नहीं है। बिल्कुल लास्ट में तो एक तो वेट ड्रिलिंग कंपलसरी की। दूसरा, इन लोगों को बताया कि आप गीला कपड़ा, अगर आपके पास मास्क रोज नहीं ला सकते तो कम से कम गीला कपड़ा जो साफा आप रखते हो, गमछा रखते हो, उससे लगाया करो, तो वो उससे काफी बचत होगी। इस तरीके की छोटी छोटी चीजों की मदद से उनको सिखाया। जो
फैक्ट्री वाला, माइंस वाला बिल्कुल लापरवाही कर रहा है, मान भी नहीं रहा, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की। 34 ऐसे माइंस होल्डर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनको वेट, जब तक ड्रिलिंग उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, मशीन नहीं लेकर आए, पूरी तैयारी नहीं की, तब तक हमने उसको शुरू नहीं किया। तो ये तो हुआ उसको बचाने का लाभ। अब जिनको हो गया उनके लिए हम क्या क्या कर पाए। तो आपने जिस आदमी को सुना था वो राजस्थानी भाषा में बोल रहा था, वो क्या कह रहा था कि जब मुझे बीमारी हुई, मैं इलाज कराते कराते मेरे पास जो जमीन थी 8 लाख रुपए की, मैंने वो सारी जमीन बेच दी और मुझे चिंता थी मेरे पोता पोती का होगा क्या। बट इससे 3 लाख रुपए क्या है, जीवित व्यक्ति को मिलते हैं और जब तक वो जीवित रहता है 1500 रुपए हर महीने मिलते हैं। और उसके जो बच्चे हैं, वो बच्चों की संख्या 2-3, ये स्कीम ऐसी है जिसमें 4-5 जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को पालनहार का लाभ मिलता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को फिर 2 लाख रुपए, यानी कुल मिला के 5 लाख रुपए का ये लाभ मिलता है। मैं जिस चीज को कहना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि मैं अगर किसी पोस्ट पे काम कर रहा हूं तो मुझे उस काम में बदलाव लाने के लिए एक भारी भरकम ऐप बनानी पड़ेगी, 20-25 लोग हों और तब जाके मैं बदलाव ला पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जैसे वो पॉलिटिकल साइंस में डिसीजन मेकिंग थ्योरी में बताते हैं कि बंदूक की जो ट्रिगर है वो 150 ग्राम का है, पर निकलने वाली गोली बहुत फर्क ला सकती है। तो छोटी छोटी चीजें हमारे आसपास जो है उनमें परिवर्तन करके हम किस तरीके से लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, इसके लिए हमने सिलिकोसिस केयर काम किया था। और अब आपको मैं वो अच्छी चीज शेयर करना चाहता हूं कि जब हमने ये किया और उसके पश्चात ये हैदराबाद के अंदर हमारा प्रेजेंटेशन हुआ, वी श्रीनिवास सर ने टीम भेजी, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट पहुंची और अब जो काम हमने जोड़े थे वो सारे के सारे काम स्टेट गवर्नमेंट ने सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए कंपलसरी कर दिया है। अब उसको सिर्फ एक ही बार ई मित्र पे जाना पड़ता है, एक बार ई मित्र पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डॉक्टर के पास जाना है, उसके बाद उसको कहीं नहीं जाना, मिलने वाले तमाम लाभ पोर्टल के माध्यम से उसको मिल जाते हैं। और ये स्टेट ने सिलिकोसिस केयर के जो पोर्टल है, जो मैकेनिज्म है, उसको अपना लिया है और ये हम सब लोगों के लिए बड़े संबलन, बड़े हौसले की बात है। मैं इसके लिए मेरी पूरी जो टीम है जो नागौर जिले में थी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी वजह से हमने ये काम किया। थैंक यू सो मच। Any questions? So we move to our next presentation by Rukmani Riyasihar. She is presently District Magistrate Hanumangarh. When she was DM Ganganagar, she worked on this computerization and SCADA system for Gang Canal water regulation. We all know that water is a precious commodity and how things change whenever there is an issue related to water. If some of the people who have gone through Indira Gandhi Canal project and other projects across the country, you will find there are so many law and order situations have built up because of distribution of water issues and other issues. So if you remove human intervention from water distribution system, faith of public in the system increases that way. And this is what she has achieved and she has done. And she has been awarded e-governance award at the national level for this particular project. Hand it over to Rukmani. Thank you, sir. Very good morning to one and all. The project that we started in Ganganagar was an e-governance initiative. Ganganagar is basically a district in the northern part of Rajasthan where 90% of the people are dependent on agriculture or allied activities. And the main means of irrigation in Ganganagar is canal-based irrigation. The canal-based irrigation is very interesting in the district because it is a 100-year-old distribution of canal network, and mainly the distribution happens through Gang Canal, which is a network of 23 canals spread across 1,222 villages, serving about 1.5 lakh farmers of the district. Next slide. Okay. So what is it that we did? See, the water that is coming into Rajasthan is coming through two dams. One is Pong Dam and one is Bhakra. And the water that is coming in is distributed through BBMC, through Government of India, amongst three major states, Haryana, Punjab
Himachal Pradesh, and then the fourth is Rajasthan. Although the water distribution is fixed, the amount of water that they will get is fixed depending on the water received through rainfall every year. Yet there is always a fluctuation of the amount of water flowing into Rajasthan every day. Now, what happens because of that fluctuation is that the system is regulated manually by the irrigation department, where they decide कि आज इतना पानी आ गया, अब इस प्रकार से ये divide होगा और किसानों को इतना मिलेगा. But this regulation chart is then made every 7 days and distributed through newspapers to the farmers. This is the system that is there in the district since the last 100 years. But what happened, like Sir was also mentioning, that the major problem with the system was because it was a manual system, it was marred by misinformation, favoritism, delays, personal desperation, and then leading to law and order situations where people do not have faith on the system because of the fact that the information which is being relayed by government is continuously changing. So we decided to work on a system in the district where we wanted to computerize this entire system, and I will share how we did that. The situation before the initiative was that there's a gauge reader. He takes the value of water that is coming into the district, and then the dealing clerk will register it in his register. Depending on the water that is available that day, a regulation pattern will be created for all the farmers of the district. And then that chart will be shared through a newspaper, and in the next 24 hours, they will get to know. What we did is we started an alternative system whereby we put SCADA system at the head of all the canals in the district. Some places the SCADA system was already available and that information was coming to the government. And we converted this entire system at one portal, a website, where we made a regulation chart automatically based on that system. And that information now we wanted to send to end user. For example, I felt कि अगर district collector को ये बात पता है कि आज 2400 क्यूसेक पानी हनुमानगढ़ गंगानगर में आना है, तो आज 2100 आया है, अगर ये बात मुझे पता है तो ये जिले के हर किसान को भी पता होनी चाहिए. उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि आज 300 जो कम हुआ वो शायद इसलिए हुआ कि किसी गेज रीडर ने कोई बदमाशी की या किसी एससी ने ये सोचा कि उस कैनाल में ज्यादा पानी डाल दीजिए क्योंकि वहां पे पॉलिटिकली शायद इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और इस प्रकार से जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो फैलनी नहीं चाहिए. तो जो सूचना अगर हमारे टेबल पे आ रही है तो वो सूचना हर व्यक्ति के पास आनी चाहिए. एंड दिस आई थिंक इज द कोर ऑफ द प्रोजेक्ट दैट वी डिड. So we in-house, without spending any money, we all have NIC at our disposal when we are district collectors. So the NIC made a website and we started giving information of our SCADA system on this website. Now, but very interestingly, we felt कि हमें लगता है कि हमने एक वेबसाइट बना दी और ये हमने इनिशिएटिव कर दिया, बट हमें ऐसा लगा कि ऐसी चीज बनानी चाहिए जो बहुत एक्सेसिबल हो. So one thing that we realized that today, in today's day and age, phones is something that is very accessible, and on phones also WhatsApp is something that is very accessible. A lot of people use it. So we linked this entire website to a application called Gang Canal application, and this is how they could open the app. For example, in the first you can see that the water share is 2400, so they would know कि आज 2400 आना था, 2485 आ रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास 2136 है जो भी पानी इधर उधर लीक हो गया उसके बाद. और उसके बाद वो अपना कैनाल क्लिक कर सकते थे और उनको समझ आ जाती थी कि आज इतनी कैनालें चल रही हैं और कौन सी बंद है, वो लाल में बंद हो गई, और अगर उसके ऊपर क्लिक करेंगे उनको पता लग जाएगा कब खुली, कब बंद हुई, कितने समय के बाद ये दोबारा खुलेगी, जिस करके वो अपना पूरा प्लानिंग सिस्टम कर सकते हैं. एंड दिस वाज मेड इन trilingual basis in Punjabi, Hindi as well as English to make it more accessible. You can see the Punjabi and Hindi version also. And because Rajasthan government has Prashashan Gaon Ke Sang Abhiyan every year, where the administration goes to the villages to promote government schemes, we use that opportunity to promote this application. We simply made QR codes and put them on our Prashashan Gaon Ke Sang camps, and the farmers were coming and we were helping them to download the app. And within 1 month, we had 50,000 active users on our portal. Now, once we had 50,000 active users, we started getting feedback from the farmers. तो अभी वो आके कहने लगे कि मैंने ये तो बहुत अच्छा किया, पर हमें क्या है ना, वो नहीं मिलता मैसेज कि अब कैनाल खुलने वाली है, अगले दिन कैनाल अब बंद होने वाली है. So it is also interesting that when you go into governance initiatives, you take the feedback from the stakeholder for whom you're working. And when the stakeholder is saying that they want information,
we realized that this is what they're asking for is something which will we will have to invest money in it, and something we didn't want to do. We wanted to make it zero expenditure model for the government. So we came across the Sandesh application, which is a state-owned instant messaging platform. And we started linking our data that we already had of the farmers back end with Sandesh. So now, whenever the canal was about to open, all the canals on, all the farmers say on F canal started getting this message कि कल आपकी canal इतने बजे खुलेगी और आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करें. और जैसे जैसे हमारे किसान हमारे साथ जुड़ते गए तो हम उनको और इन्फॉर्मेशन भी देते गए. जैसे हम मंडी के रेट्स के बारे में बताने लग गए, जो गवर्नमेंट की बाकी स्कीम्स हैं उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देने लगे. मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी समय की सीमा को देखते हुए कि जैसे गंगानगर में हमने ये देखा कि वेदर बेस्ड इंश्योरेंस जो है वो किसान नहीं कर रहे और ज्यादातर वहां पे खेती कीनुओं की होती है जो वेदर सेंसिटिव क्रॉप है. तो पिछले साल का डेटा ये था कि बस 20 किसानों ने वेदर बेस्ड इंश्योरेंस कराया था. एंड वंस वी स्टार्टेड इन्फॉर्मिंग द फार्मर्स थ्रू द मैसेजिंग सिस्टम, we increased the farmers to 500 in single year who went in for the weather based insurance. So similarly we started saturating other government schemes. But the most important thing of any, I think, government initiative is how many, by what percentage are we able to reduce the grievances? People who are coming to you, are we able to satisfy them? Are they now less angry maybe at the system? They are more satisfied that there is more transparency in the system. So through the data from Sampark portal, we saw that there is a significant reduction in public grievances with respect to farmer issues related to their baris, which is the turn of water that they will get, the amount of water they will get, and opening and closing of canals, and also the theft. Theft we realize is something that they used to assume कि कम मिला है तो चोरी हो रहा है. तो जब आप सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि the transparency helps people's dependence on less dependence on manual system and more dependence on administrative system. And we were very fortunate to get appreciations from across our ministers and most importantly the stakeholder farmers. And lastly, because my time is over, as I move ahead in my service, I realized that this is not only related to irrigation. This is something that can be done across. For example, we faced floods in Hanumangarh last month. And I used to get information of SCADA from irrigation department of Haryana. So I used to call them, या वो मुझे WhatsApp पे मैसेज करते थे कि आज गुल्ला चिका पे पानी इतना हो गया और आपके जिले में इतना आएगा और अब फ्लड आपके पास कब आएगा. I felt that अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे इतनी जरूरी चाहिए तो वो जो किसान हैं या वो जो लोग हैं जो लो लाइंग एरिया उस फ्लड में रह रहे हैं, अगर उनको भी उसी प्रकार से वो इन्फॉर्मेशन मिले, which will be very beneficial for them. So this is not an initiative which is only focused on only irrigation. It can be used also in disaster relief and such initiatives where all the people who are stakeholders should get the information that government has with them, which they have more right to get, and also they are in more need of it, I would say. So thank you everyone for this opportunity, especially V. Srinivas sir and Dhera sir. Thank you. Any questions? No, sir, it was a single way process. We were getting information, sir. Sir. So through SCADA, primarily we were invoking real-time data through sensors, and based on that we were disseminating to the farmer. Now, the operation part, the operational part, based on feedback, that was still lacking. Right, sir. Right. So, in irrigation department, since I've been in this department for 3 years, so IGNP, we did two-way study, primarily because of this. Because these wage leaders, these gate operators, these regulation guys, they do this notoriety at the operational level. So this initiative is very good, but now you've migrated to another district, but
to make it more purposeful at the operational level, it has to be a two-way. No more questions. So we wrap up this session. As have you seen that in Rajasthan, young officers are giving their best and creating new initiatives in each and every district where they are going. These are just some of the glimpses of that, but sir know it very well that so many officers have delivered at so many platforms. And sir, I was sir's probationer at Jodhpur and I learned a lot from him. So whatever we are today, we owe a lot to him. So we will wrap up this session because it was supposed to end at 10:45, and I will hand over ring to the next session. Thank you for that. Thank you all. Thank you very much. And to present the mementos, I'd like to invite on the dais Mamta Raoji, JSAR, Government of Rajasthan, to present a memento to Hemant Keraji, memento to Jitendra Kumar Soni ji, memento to Siddharth Sehag, and memento to Rukmani Riyar. Thank you very much for that engrossing session. And now moving on to session number 7. PM Awarded Initiatives 2022 Innovation District. To chair this session, I'd like to invite on the dais Sri Naveen Mahajan, DG HCM RIPA, 1997 batch IAS officer, Rajasthan cadre. He's also the Principal Secretary Training, has held important portfolios in state government in his illustrious career. He also has an enviable record of a 10-year-long stint as district collector of 6 districts. Felicitated at the national level for his pioneering work in Narega and water resources, Sri Naveen Mahajan. And I think he's going to be on the dais. He's the only one going to be on the dais because Sri Ravindra Kumar, DM Rampur UP, he would be joining through VC. IAS Ravindra Kumar, उन्होंने मिशन समर्थ चलाया जिसके तहत 61 दिव्यांग बच्चों की सर्जरी करवाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघरों को घर दिलाने और बनवाने में बहुत लोगों की मदद की और 900 से अधिक तालाब बनवाकर जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। Then we have Sri Sunny K Singh, District Collector, Changlang, Arunachal Pradesh. He'll be joining again through VC. And he has received the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration 2022 under Innovation District category for Initiative New Age Learning Center. So over to Naveen Mahajanji. Good morning, everybody. So we have 2 young IAS officers who are going to present their initiatives for which they got felicitated at the national level. So without wasting any more time, so I'll call upon Ravindra Kumar for dwelling on his initiative Samvardhan. It's basically vocal for local kind of an initiative, and he's a young officer, 2013 batch, and he's presently Collector Bijnor. So am I audible, Mr. Ravindra? Good morning, sir. Yeah, good morning. So Ravindra, over to you. You can take on from here. Good morning, sir. Thank you, sir. Sir, first of all, I would like to clarify, I am Nankishore Kalar, Chief Development Officer, Rampur. Because of some extraordinary situation, sir could not connect. Although he traveled to Jaipur, but he could not connect. So he has asked me to present on his behalf.
but I was first hand involved in this project and this intervention, so I will be presenting on his behalf. First of all, sir, I would like to extend apologies from sir's behalf for not being able to present and do the presentation there, sir. Sir, can I continue with the presentation, sir? Yeah. Please. Thank you, sir. Sir, I am Nankishore Kalar, Chief Development Officer, Rampur. I am IS Officer of 2018 batch. And I will be presenting this intervention on DM sir behalf. सर अगर की प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रामपुर में अगर हम NFHS 5 की अगर बात करें तो NFHS 5 के हिसाब से एक गुड नंबर ऑफ ऑलमोस्ट 5.9% चिल्ड्रन जो है जो कि 5 साल से कम की एज के हैं वो वेस्टेड विच इज वेट फॉर हाइट और उसका मेन रीजन जो है विच यू कैन सी की सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीपल एंड सर्टेन डेमोग्राफिक रीजंस बिकॉज डिस्ट्रिक्ट रामपुर का जो डेमोग्राफी है वो दूसरे जिलों से डिफरेंट है सर्टेन पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है वो यहाँ पर उनका पॉपुलेशन में मेजोरिटी ज्यादा है तो विच ऑल्सो एड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ माल नरिशमेंट हमने सर एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जैसा कि भी इनिशियली बताया गया था वोकल फॉर लोकल है इस पायलट प्रोजेक्ट में हमने इनिशियली ये देखा कि क्यों ना बच्चों को कुछ एग्स दिए जाए कुछ नॉनवेज वगैरह उनको खिला के फिर उनका इम्प्रूव किया जाए लेकिन उससे सर ज्यादातर बच्चों को वो सूट नहीं किया तो हमने हमारे यहाँ पर ICMR के एम्स के और WHO के जो एक्सपर्ट्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ में टाई अप करके और लोकल जो प्रोडक्ट्स जो लोकली ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी हेल्प से सर पोषण किट्स हमने बनाई इनिशियली सर 101 सेम चिल्ड्रन के ऊपर हमने ये प्रोजेक्ट किया और बाद में सर हमने इसको स्केल अप किया जब हमको लगा कि 3 महीने तक जो हमारी लोकली डेवलप्ड पोषण किट्स है उन पोषण किट्स को जब हमने बच्चों को 3 महीने तक रेगुलरली जो प्रेस्क्राइब्ड डोजेस थी उन डोजेस के हिसाब से जब खिलाया तो हमने देखा कि बच्चों में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आया है कीपिंग दैट इन माइंड हमने इसको स्केल अप किया और सर 1916 जो सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड जो हमारे चिल्ड्रन थे उनको हमने इसमें इन्वॉल्व किया इसमें सर बेसिकली जो आइडिया था वो PM पोषण अभियान से हमने मोटिवेशन लिया वहां से हमने कुछ की पॉइंट्स भी दिए थे पोषण किट्स सर हमने डेवलप करी वो हमारे सर जो ICMR एम्स और WHO के एक्सपर्ट्स थे उनके गाइडेंस में और उनके डायरेक्शन में हमने डेवलप करी और ऑर्गेनिक हनी तिल A2 घी ऑयस्टर मशरूम कॉर्न ड्राई फ्रूट ब्लैक बीट मोरिंगा कोर्स गेन और हमारे जितने मिलेट्स हैं दूसरे जिसको श्री अन्न कहा जाता है उसको उसके थ्रू हमने पोषण किट्स बनवाई सर इसको ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया जाए सर स्टैंडर्ड तरीके से बनाया जाए प्रोपोर्शंस का ध्यान रखा जाए उसके लिए हमने एक लोकल हमारा FPO है उस FPO को हमने रोपिंग किया ताकि इसको एक सस्टेनेबल तरीके से और अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हुए इसको किया जा सके अगर हम इम्पैक्ट की बात करें सर तो जो हमारे जितने बच्चों को हमने इनिशियली पोषण किट्स हमने खिलाई 94% बच्चे मालनरिशमेंट से बाहर आ गए इसमें बिकॉज वोकल फॉर लोकल था और क्योंकि हमने ये डिसाइड किया कि सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हम डिस्ट्रिक्ट के फार्मर से ही FPOs के माध्यम से प्रोक्योर करेंगे तो जो हमारे प्लस जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो हमने यूज किए उसका कल्टीवेशन एरिया हमारा डाइवर्स हुआ फार्मर्स की इनकम इससे बढ़ी सर और बाद में सर हमने इस प्रोजेक्ट को स्केल अप करके जो प्रेग्नेंट वुमन थी और जो हमारी एडल्ट सेल जो गर्ल्स थी जो कि एनीमिया से ग्रसित थी उनके ऊपर भी इसको हमने स्केल अप किया तो MMR के अंदर हमने इसमें रिडक्शन देखा IMR के अंदर भी हमने रिडक्शन देखा और एंटीनेटल केयर जो कि प्रेग्नेंट वुमन को 9 महीने के ड्यूरेशन में 4 बार एंटीनेटल केयर देनी होती है उसके प्रति भी हमारी जो ग्रास रूट वर्कर्स थी आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स और NMs उनमें सेंसिटिविटी बढ़ी और जो हमारा ANC था वो भी 29.3% से इंक्रीज हुआ और माल न्यूट्रिशन जो था वो हमारा टोटल ओवरऑल 59.3% जो था वो रिडक्शन हो गया कंपेयर टू 2020 2 साल में सर हमारा ये इम्प्रूवमेंट था नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर अगर हम क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये 2 कंपैरेटिव चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो सैम चिल्ड्रन थे उनके अंदर तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आया ही आया कुछ बच्चे ऐसे थे हमारे जो कि मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन हमारे ऐसे थे जो कि माल नरिशमेंट के एम्बिट से बाहर आकर के और नॉर्मल हो गए
कुछ जो थे वो सैंड से मैम में कन्वर्ट हो गए, बट मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन 94% चिल्ड्रन ऐसे थे जिन्होंने 3 महीने की पोषण किट के कंजम्पशन के बाद में इधर दे कन्वर्टेड इनटू मैम और दे बिकेम नॉर्मल, उनका मालनरिशमेंट वेनिश हो गया। हमने फार्मर्स को एफपीओ के माध्यम से बड़े लेवल पर इसमें इन्वॉल्व किया। आप देख सकते हैं कि सर 16.9% फार्मर उनकी इनकम डबल हुई, विच इज ऑल्सो ए मेन एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट। ओवरऑल अगर की एलिमेंट्स की हम बात करें तो 5325 हमारे फार्मर्स इसमें 5325 बेनिफिशरीज हमारे ट्रीट हुए। 2080 फार्मर्स का हमने एसोसिएशन इस प्रोजेक्ट के थ्रू किया सर। और वन इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमारी जो पोषण किट्स थी सर, उस पोषण किट्स को स्टैंडर्ड तरीके से बनाया जाए, उसकी क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी के साथ में किसी तरह का कोई सर उसमें वेरिएशन ना आए, उसके लिए हमने एफपीओ को लोनिंग करवाई और एफपीओ ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी डेवलप करी। उस स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी के अंदर हमने सर फिर हमारी जो एसएचजी की वुमन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उनको ऐसे एफपीओ के साथ में टाई अप कराया। दे प्रोवाइडेड द लेबर कंपोनेंट or the assembly component to the FPO, so that way we also involved along with the farmer Asha, and then we also involved the NRLM or the SLG woman into the project as well. प्रोडक्ट्स को हमने सर NABL और FSSAI के साथ ड्यूली सर्टिफाई कराया, सो दैट किसी प्रकार का हेल्थ इश्यू या किसी प्रकार का रिस्क फैक्टर पोषण किट के कंजम्पशन में बच्चों के साथ में ना क्रिएट हो। नेक्स्ट प्लीज। अगर इस मॉडल की बात करें सर तो बिकॉज इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन तो हम कर लेते हैं, लेकिन वो इंटरवेंशन सस्टेनेबल हो, इंटरवेंशन स्केलेबल हो, और उस इंटरवेंशन से जो एक्चुअल में जिस टारगेट ग्रुप को हम टारगेट करना चाहते हैं वो टारगेट ग्रुप इंटरवेंशन से टारगेट हो। इसके लिए सर हमने 3 चीजों के ऊपर फोकस किया। इकोनॉमिक इनोवेशन इसलिए है कि वोकल फॉर लोकल है, हमने लोकली ग्रोन प्रोडक्ट्स का यूज किया और लोकली हमारे फार्मर्स से उनको इससे फायदा हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट इज एन इकोनॉमिक इनोवेशन। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन की बात करें सर तो नॉर्मली माल न्यूट्रिशन के केस में हम इस तरह का हमारा फोकस रहता है कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट वो ही मेन इसका जो ऑनर्स है वो अपने ऊपर ले, बट जो यूपी पंचायती राज एक्ट है वो ग्राम पंचायत को भी ये रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि माल न्यूट्रिशन को कैटर करने में, माल न्यूट्रिशन को ग्राम पंचायतों को भी अपनी भूमिका का निर्माण करना है। इसलिए सर हमने सीधे सीधे ग्राम पंचायतों को माल न्यूट्रिशन से फाइट करने के इस कैंपेन में ऐड किया। तो जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो 15 फाइनेंस कमीशन के थ्रू जो सीएफसी ग्रांट आता है उसके माध्यम से हमने एफपीओ से सीधे उनका टाई अप करवाया सर, और गांव में जो भी सैम बच्चे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करा के उनकी लिस्ट ग्राम पंचायतों से वेटिंग करवा के और फिर एफपीओ को फॉरवर्ड करवाई, और एफपीओ के माध्यम से और ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो पोषण किट्स हैं उनका सीधा सीधा हमने टाई अप करवाया। अगर हम इसके न्यूट्रिशनल इनोवेशन की बात करें तो सर WHO, ICMR और एम्स को हमने रोपिंग किया। इसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो आप देख सकते हैं सर, खट्टा मीठा लड्डू है जो भी जैगरी और आंवला से बनता है, केरोटीन और थाइमिन उससे बच्चों को मिलते हैं, मशरूम कॉर्न सूप जिससे विटामिन B5, फोलिक एसिड, कोलिन मिलता है, ऑर्गेनिक हनी, मल्टीग्रेन कुकीज जिसमें बेसिकली मिलेट्स का यूज किया जाता है, आंवला त्रिफला जूस, सुपर फूड सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें, और ब्लैक बीट, मोरिंगा, फ्लैक्सीड, दलिया। इनसे सर ये मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं जिनकी बच्चों में आमतौर पर कमी होती है, और जिसकी वजह से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी उनके ऊपर जितना रिक्विजिट इफेक्ट आना चाहिए वो इफेक्ट नहीं आ पाता, तो उसको हमने कवर किया है सर। दैट वे इट बिकम्स एन इकोनॉमिक इनोवेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन एंड न्यूट्रिशनल इनोवेशन, और ये हमारा मॉडल स्केलेबल और रेप्लिकेबल अक्रॉस द ग्राम पंचायत। तो इसके लिए हमने एक मॉडल MOU साइन करवाया। ये मॉडल MOU हमने सर ग्राम पंचायतों के बीच में और एफपीओ के बीच में साइन करवाया, सो दैट कंटिन्यूअस, सस्टेनेबल और व्हेनेवर रिक्वायर्ड जो पोषण किट से उनकी सप्लाई ग्राम पंचायतों को कंटिन्यूसली होती रहे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो बिकॉज जो लोकल लेवल गवर्नेंस है उसका सर इसमें सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है। तो MOU जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, एफपीओ के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में MOU साइन कर दिया था। तो हमने प्रोडक्शन, प्रॉफिट, पैकेजिंग और मार्केटिंग इन 4 चीजों के ऊपर पूरी तरीके से फोकस किया सर। एफपीओ ने एज ए प्राइवेट पार्टनर और एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर एफपीओ ने हमारे साथ में टाई अप किया। ग्राम पंचायतों में सर एफपीओ के साथ में अपना जो भी जो एक्ट है उसके प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए सर प्रोक्योरमेंट का अपना कार्य किया, और बेनिफिशियरीज को सर हमने अपनी जो ग्रास रूट मशीनरी है, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनके थ्रू हमने इसको टारगेट किया। नेक्स्ट प्लीज।
One more important thing I would like to refer here is that हमने इसमें डोर स्टेप डिलीवरी हमने इंश्योर की सर, सो दैट जो सप्लाई का लंबा चेन होता है जिसमें कई बार लीकेज का इश्यू होता है या फिर कई बार जो टारगेटेड बेनिफिशियरी होता है उस तक हमारी सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, तो हमने ये सुनिश्चित किया कि एफपीओ के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जो भी सप्लाई दी जाएगी वो बेनिफिशियरी के डोर स्टेप तक इसमें दी जाएगी। अगर हम इसमें सर मॉनिटरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की और ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इसमें पूरी तरीके से मेंटेन की गई थी बिकॉज एमओयू साइन किया गया था और दैट्स व्हाई इसमें सीधा सीधा जो बेनिफिशियरीज था और जो ग्राम पंचायत थी और एफपीओ था उनके बीच में सीधे सीधे टाई अप था। हमने सर एक लोकली हमने एनआईसी के थ्रू एक ऐप डेवलप किया, वात्सल्य ऐप, बिकॉज ये माल न्यूट्रिशन का जो अप्रोच होता है वो एक लाइफ साइकिल अप्रोच होता है। उसमें हमने सिर्फ कुछ टारगेट बच्चों को टारगेट करते हैं और उनको उससे वो जो ओवरऑल माइनस है वो खत्म नहीं होता। हमने एक ऐप लोकली डेवलप किया जिसको हमने वात्सल्य ऐप नाम दिया सर। उस ऐप के माध्यम से अगर किसी बच्चे में हमको माल न्यूट्रिशन के अर्ली साइंस नजर आते हैं तो वो अर्ली साइंस उसके बेसिस पे हम उस बच्चे को ट्रैक कर लेते हैं और फिर उस बच्चे को हम इनिशियल स्टेज पे ही उसके न्यूट्रिशन पे फोकस कर देते हैं और उसको पोषण किट्स के माध्यम से उसको क्योर करने का प्रयास करते हैं सर। तो इस ऐप के माध्यम से हमारे बच्चों की सर रियल टाइम ट्रैकिंग हो जाती है। कैपेसिटी बिल्डिंग सर हमने इसमें की है सर, फार्मर्स की हमने ट्रेनिंग कराई है, हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स की, आशा की, एएनएम्स की ट्रेनिंग करवाई है। उसके अलावा थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ये सुनिश्चित करने के लिए कि रियल जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए हमने एनजीओस के माध्यम से थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी करवाया है सर। सोशल अवेयरनेस हमने बड़े स्तर पर करवाई सर, आईईसी मटेरियल के माध्यम से, आंगनबाड़ियों के ऊपर पेंटिंग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने काफी करवाई। और इसमें सर इंपॉर्टेंट थिंग इसकी हमने जन भागीदारी के ऊपर पूरा फोकस किया है। गांव के अंदर हमने सर पोषण पंचायतें ऑर्गेनाइज करवाई है। हर गांव में ये माल न्यूट्रिशन का अवेयरनेस फैलाने के लिए गांव के जो सरपंच होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो गांव के पटवारी और लेखपाल कानूनगो होते हैं, उनकी अध्यक्षता में सर सभी ग्राम पंचायतों में बड़े लेवल पर पोषण पंचायतों का आयोजन किया गया। और वो पंचायतें बहुत फ्रिक्वेंटली 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर और गांधी जयंती 2 अक्टूबर के मौके पर भी पोषण को ग्राम पंचायतों की मीटिंग के एजेंडा में बहुत इंटेंसिवली हमने इसको इंटरप्रेट करवाया है। नेक्स्ट प्लीज। सो दैट वे सर हमारा जो मॉडल है वो सस्टेनेबल है, रेप्लिकेबल है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इसके अंदर हमारी नोडल एजेंसी है और जो लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके माध्यम से हमने ये पूरा का पूरा इंटरवेंशन किया है। एमओयूज के माध्यम से सर इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी है और जो किट्स हैं इसको मॉडल को सर अक्रॉस द स्टेट भी रेप्लिकेबल किया गया है। बहुत सारे जिले हैं जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है सर, संबल, कानपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर। इसके अलावा आउट ऑफ द उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और इनफैक्ट उज्बेकिस्तान से भी इस प्रोजेक्ट को लेकर के काफी हमको इंटरेस्ट देखने को मिला और हमने वहां पर भी ये पोषण किट्स सर सप्लाई करी है। आप सर फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि ऑनरेबल सीएम सर ने भी इस प्रोजेक्ट को काफी सराहा है और उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को अपना आशीर्वाद दिया है। आप हमारे चीफ सेक्रेटरी सर है, उन्होंने भी इसके लिए हमको स्पेशल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दिया है सर। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें सर तो अब इस प्रोजेक्ट को सर हम बेसिकली और अधिक सस्टेनेबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ज्यादा बेटर पूल एंड बिगर पूल ऑफ बेनिफिशियरीज जिसमें कि प्रेग्नेंट वुमन भी हो, एडोलेसेंट गर्ल्स भी हो और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वो भी हो, उसको भी हम इसके अंदर शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं सर। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर पूरा का पूरा फोकस है सर और अधिक लोकल फार्मर्स को पोषण किट्स के लिए मटेरियल सप्लाई करने की हम उस सप्लाई चेन के अंदर शामिल करवाना चाह रहे हैं सर। और एक एफपीओ के ऊपर हमारा डिपेंडेंस ना रहे इसलिए जो दूसरे एफपीओ हैं उन एफपीओ को भी अब हम इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। और जो एसएचजी है हमारी, एसएचजी और एफपीओ के बीच में इस टाइप को हम काफी इसको डीपली इंग्रेन करवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जो प्रोजेक्ट है ये न सिर्फ जिले में हमारा कंटेंट रहे बल्कि जिले से बाहर भी जा सके। नेक्स्ट प्लीज। ये सर आप ग्लिम्सेस देख सकते हैं मीडिया कवरेज हमारे इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू वेरी मच। So thank you, Nan, you and your DM Ravinder ji. I think it's an excellent initiative and a very comprehensive one. It's not only enabled more than 5,500 beneficiaries to come out of
malnutrition. At the same time, you've also helped in improving the income levels of farmers. And it's been a very collaborative kind of a venture at the panchayat level. And even you got the audit done from NGOs for third-party feedback. So I think it's a very commendable initiative, and deservedly they got the Prime Minister's award as well. So any questions, any queries from the audience? Yeah. Thank you, Chairman. I'm Raj Kumar from CSTV, Science Technology Media. Question है कि sustainability and reliability and economic development. अच्छा प्रेजेंटेशन है FPO का, और भारत के अंदर FPO बड़ा, और राजस्थान में FPO बहुत डेवलप हो रहे हैं. क्वेश्चन आता है कि अभी मैं वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोग्राम में था, कितना Sir, the gentleman asking the question is not audible, sir. परफॉर्मेंस वेस्ट रिप्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जो जितना भी वेस्ट है रूरल एरिया में चले जाइए, सॉलिड वेस्ट पड़ा है, कोई उसका डिमार्केशन है, उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होता. तो माइनर पुट वेस्ट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एज ए एंटिटी, न्यू इनिशिएटिव रूरल एरिया, और उसको चेंज कर दिया जाए इन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप के अंदर, जिससे कि जो हमारी वेस्ट है उसका वैल्यूडेशन होगा, इकोनॉमिक होगा, सस्टेनेबिलिटी, और जो सस्टेन डेवलपमेंट की गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक, वो डेवलप होगी. आपका अच्छा सुझाव है. डायरेक्टली आपके इस प्रोजेक्ट से तो रिलेवेंट नहीं है. तो इनका कहने का ये है कि जो वेस्ट है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेस्ट जो रूरल एरियाज में बड़ा अबंडेंट है, उसको किस तरह से हम लीवरेज कर सकते हैं, एंड पैरेलल टू व्हाट वी हैव इन द फार्मिंग सेक्टर FPO. So something on that possibly can also be given upon. So thank you, sir. So anybody else? So thank you. Thank you. So now we move Thank to. you very much, sir. Yeah, thank you. So now we move to Arunachal Pradesh, and we have in our midst 2018 batch IS officer Sunny K. Singh, and he's Deputy Commissioner District Changlang in Arunachal Pradesh, and he'll dwell on it, the NALC for which he got felicitated at the national level. It's a very novel concept where they introduced duck farming in conjunction with fish and paddy cultivation. So it's a very unique model which they came up with, and eventually they also promoted learning at the grassroots level through these libraries which they call NALC. So over to you, Sunny. I hope we are audible. Yes, sir. Yeah, please go ahead. Very good morning, sir, and very good morning to all the dignitaries present. My name is Sunny K. Singh, and I'm IS 2018 batch, currently posted as Changlang District, Arunachal Pradesh. I'll briefly talk about my district first. Changlang is a easternmost district of not only Arunachal, India, I must say, and we share border with Myanmar. It's famous for two things. First is world-renowned Namdapha National Park. It's only national park in world where we find 4 cat species together, like leopard, clouded leopard, snow leopard, and tiger. And it's also famous for famous Stillwell Road, which is having relevance for World War II. Apart from this, since we share border with Myanmar, so there are a host of negative things also involved. Like we suffer from insurgency, there is cases of drug trafficking.
So this was the context in which this initiative was undertaken. तो सबसे पहले टू स्टार्ट विद मैं सबसे पहले क्यों हम लोगों ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट में जब हमने देखा कि जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज थी वो मैक्सिमम नॉन फंक्शनल थी, उसमें जो बच्चों का टर्नअप था वो काफ़ी कम हुआ करता था, बुक जो रेलिवेंट बुक्स होते हैं वो बुक्स अवेलेबल नहीं थे, फर्निशिंग अच्छी नहीं थी, अट्रैक्टिव नहीं था सेटअप। उसके बाद से चांगलांग इज वन ऑफ द 10 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो इससे जो देखा गया कि लर्निंग लेवल काफ़ी बच्चों का कम था, नॉलेज का जो एक कल्चर था वो पूरा मिसिंग था। कहीं कहीं ये भी देखा गया कि थोड़े से स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, वो ड्रग के इश्यूज में इन्वॉल्व होते थे। हमारे खास करके जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो बच्चे आते हैं, जिनके घर में डेडिकेटेड स्टडी रूम नहीं होता, उन लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी पढ़ाई करने में। खास करके एग्जाम के पहले जब पावर, यहाँ पे थोड़ा सा रिमोट डिस्ट्रिक्ट है तो पावर सप्लाई पूरा टाइम नहीं होता, उन लोगों को पढ़ने में काफ़ी तकलीफ होती थी। इसके अलावा जब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से हम इंटरेक्ट करते हैं तो ये पाया गया कि जो हॉबीज हैं उनकी काफ़ी लिमिटेड हैं, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो है, एक्सपोजर इसका, और मेन रीजन देखा गया कि इसमें एक्सपोजर की कमी थी उनके लिए इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं थे जहां वो हॉबीज अपने हॉबीज को होन अप कर सकें, अपने एक्सपोजर लेवल को बढ़ा सकें। और लास्ट में ये देखा गया कि क्यों लाइब्रेरीज नॉन फंक्शनल हैं, तो उसमें एक चीज जो सामने आई कि जो हमारी ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज हैं वो जो नया जनरेशन है, जिनके एस्पिरेशंस, जिनके डिमांड काफी अलग है जो हमारे पीछे के जनरेशन से। अभी की टेक्नोलॉजी यूज करना चाहती है, ऑनलाइन किताबें पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ऐसे जमाने में अगर हम बच्चों को बोलते हैं कि आप आके किताब लेके और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए, तो उनको ये चीज इतना अपीलिंग नहीं लगता। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि कुछ एक ऐसा सेटअप हम लोग डेवलप करें, एस्टैब्लिश करें, जो कि एक ट्रेडिशनल लाइब्रेरी से अलग हो, मतलब कि वो नए जनरेशन के सारे एस्पिरेशंस को, उनके डिमांड को अलाइन करे। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये न्यू एज लर्निंग सेंटर को डेवलप किया। बेसिकली हम एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज को ही ट्रांसफॉर्म करते हैं न्यू एज लर्निंग सेंटर्स में। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट कि एक वीडियो जो हमने भेजा हुआ है उसको आप प्लीज प्ले करें कि ये कैसा दिखता है, वो ताकि व्यूअर्स को पता चल जाए।
I think connection with Sunil is lost. फॉर द इंटरवेंशन बीच में कनेक्शन कट हो गया था, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो में देखा कि ये एक ऐसा स्पेस है जिसमें हम एंड टू एंड लर्निंग प्रमोट करते हैं। ये एक ट्रेडिशनल लाइब्रेरी से कैसे अलग है वो मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल देके बताना चाहूंगा कि जैसे एक रेगुलर फोन और स्मार्टफोन का डिफरेंस है कि रेगुलर फोन में सिर्फ कॉल कर सकते हैं, स्मार्टफोन में कॉल करने के अलावा अगर कोई ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहता है वो पढ़ाई कर सकता है, कोई म्यूजिक सेशन अगर म्यूजिक सीखना चाहता है वो सीख सकता है, कोई अपने म्यूजिक को अपलोड कर सकता है। तो बेसिकली उसी तरीके से इस जो सेंटर है इसमें हम रीडिंग के अलावा लर्निंग के अलग अलग मॉड्यूल्स के थ्रू बच्चों के पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश करते हैं। और इसमें आपने जैसा देखा कि अलग अलग सेक्शंस हैं। एक ट्रेडिशनल लाइब्रेरी जैसा एक सेक्शन है जिसमें हम सिर्फ रीडिंग प्रमोट करते हैं। कुछ डेडिकेटेड केबिन्स हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह जो बच्चे तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड केबिन्स बना के रखा हुआ है। एक जो सेटअप है वो है जिसमें हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और बेसिकली हॉबीज इनकलकेशन और लेजर एक्टिविटीज प्रमोट करते हैं। तो जैसा आप सभी ने देखा कि इसका डिजाइन जो है वो काफी स्टेट ऑफ आर्ट है। इसमें हम लोगों ने डिजाइन किस तरीके से किया इस पूरे सेटअप को, तो उसके लिए स्टेक होल्डर को कंसल्ट किया, उनको कंसल्ट किए कि वो किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज लाइब्रेरीज में टेबल्स और चेयर्स होते हैं, मैक्सिमम लोगों को वो चीज अपीलिंग नहीं लगता। तो हमने सोचा कि इसमें फ्रीडम और फ्लूइडिटी डाली जाए ताकि जो यूजर्स हैं उनके डिमांड के हिसाब से हम सेटअप को तैयार करें। तो किसी ने अगर स्विंग पे बैठ के पढ़ना चाहता है, कोई अगर लेट के पढ़ना चाहता है, हमने सारे चीजों को एनेबल किया कि वो अपने हिसाब से अपने कंफर्ट के हिसाब से इसमें पढ़ाई कर सकें। सेकंड चीज, इसमें हम लोगों ने एक लेजर का एलिमेंट डाला, खास करके लेजर लर्निंग में बोलूंगा, जिसमें मोटिवेशनल मूवीज हम दिखाते हैं, बच्चों को स्क्रीन करते हैं समय समय पे, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं। जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क है, तो अगर इकोलॉजी के बारे में बच्चों को सेंसिटाइज करना है तो हम उनको डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज दिखा के उससे उनको सवाल पूछते हैं, उनको समझाते हैं, क्योंकि कई बार इंटरैक्टिव लर्निंग से बच्चों को ज्यादा सीखने मिलता है। इसके बाद से हम टेक्नोलॉजी को इसमें काफी हद तक इंटीग्रेट करने की हम लोगों ने कोशिश करी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से जो हमारे यूजर्स हैं वो फ्यूचर रेडी होते हैं। तो इसमें किंडल्स, टैबलेट्स, उसके साथ साथ हम लोगों ने एक खास तौर से ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के ऊपर में हम लोगों ने जोर देने की कोशिश की। बच्चे हैं जो यहाँ से अभी तक स्टेट के जो कैपिटल है वहां तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, आज तक घूमने को नहीं मिला। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के थ्रू जो भी हमारे वर्चुअल वीडियोज अवेलेबल हैं मॉन्यूमेंट्स के, म्यूजियम्स के, जो दिल्ली में बेस्ड, बैंगलोर में बेस्ड, वो सब म्यूजियम का टूर भी कराते हैं, वर्चुअल टूर कराते हैं, ताकि बच्चों में एक नेशनल इंटीग्रेशन की भावना भी आए। साथ में जो उनकी क्रिएटिविटी होती है उसको होनअप और उसको इनकलकेट करने की भी कोशिश करते हैं, जैसे स्केचिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सब एक्टिविटीज को भी हम बच्चों को सिखाते भी हैं। पीयर टू पीयर लर्निंग प्रमोट करते हैं। रिसोर्स पर्संस, एक एनजीओ को हम लोगों ने रोपिन करके रखा हुआ है जो अलग रिसोर्स पर्संस प्रोवाइड करते हैं, जो इन बच्चों को अलग अलग हॉबीज, अलग अलग एक्टिविटीज सिखाने में, उनको एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ लाइफ स्किल जो इम्पार्टिंग स्पेस भी है, यहाँ पे हम डिजास्टर मैनेजमेंट बेस्ड ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं कि अगर अर्थक्वेक आता है तो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपको क्या क्या चीजें करनी होती है। बच्चों को हम इमरजेंसी मेडिसिन, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होते हैं, किसी को एलर्जी हो गया तो किस तरीके का मेडिसिन हमें देना होता है, सीपीआर देना सिखाते हैं, उसकी डमीज होती है जिसपे बच्चों को हम सीपीआर देना सिखाते हैं। इसके साथ साथ हॉबीज कल्टीवेशन और नर्चरिंग भी हम लोग इसमें सिखाते हैं। एसे राइटिंग क्लब्स हैं, रीडिंग क्लब्स हैं, म्यूजिक के क्लब्स हैं, कुछ
बच्चों को जिनको गिटार सीखना पसंद है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में म्यूजिक को लेके बच्चे काफी इंटरेस्टेड होते हैं, तो उस तरीके से अलग अलग क्लब्स बना के रखे हुए हैं हॉबी। फिर फन एंड रिक्रिएशन के लिए जैसा मैंने बताया कि मूवीज तो दिखाते ही हैं, बट यहाँ पे बच्चों को फुटबॉल में काफी इंटरेस्ट है और अलग गेम्स में भी। तो इसलिए जब भी फीफा के मैचेज होते हैं या फुटबॉल के कोई भी इंटरनेशनल लेवल मैचेज होते हैं या नेशनल लेवल, हम वो स्क्रीन करते हैं यहाँ पे, ताकि बच्चे ग्रुप में उस चीज को देख सके और एंजॉय कर सके। इसके साथ साथ इवन कई बार रिपब्लिक परेड हुआ, ये सब चीजों को भी हम स्क्रीन करते हैं कि परेड में इस चीज का क्या सिग्निफिकेंस है। तो बेसिकली, और ये जो स्पेस है ये पूरा वाईफाई इनेबल्ड स्पेस है। इसमें बाइजू इंटीग्रेटेड स्मार्ट टीवी भी प्रोवाइड किया गया है बच्चों को। कुछ बच्चों को जिनको मैथ्स में, साइंस में पढ़ने में दिक्कत आती है, उन बच्चों को वीडियो के थ्रू उस टॉपिक्स को समझाया जाता है। तो बेसिकली इसमें पर्सनालिटी के, जैसा हमने बताया था कि पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट को हम टच करते हैं। इसमें बेसिकली बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाने से लेके उनका सेल्फ डिस्कवरी के लिए, जैसे ड्रामा कंपटीशन हो गया, उनका बेसिकली कॉग्निटिव स्किल को रिफाइन करने के लिए इसमें हम माइंड पजल्स हो गया, और इसके साथ साथ जितने भी बुक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहिए होते हैं वो सारे बुक्स हम ऑनलाइन या ऑफलाइन अवेलेबल करा के रखते हैं। इसके साथ साथ इसके जो आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स, वो भी काफी फ्लेक्सिबल हैं। अगर बच्चों के तरफ से या यूजर के तरफ से डिमांड आता है कि अभी एग्जाम है, आप 12 बजे तक हमें कर दीजिए, तो उसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं। शिफ्ट में जो यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं वो शिफ्ट में काम करते हैं, तो हम इसका वर्किंग आवर को भी काफी फ्लेक्सिबल रखने में कामयाब हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ एक्टिविटीज है जो आप देख सकते हैं। पहले वाले फोटो में स्केचिंग सिखा रहे हैं जो रिसोर्स पर्सन है। सेकंड वाले में पब्लिक स्पीकिंग छोटे छोटे बच्चों को करने दे रहे हैं। थर्ड में हम फीफा मैचेज स्क्रीन कर रहे हैं। फोर्थ में एक डिबेट कंपटीशन हो रहा है। पांचवें में योगा कर रहे हैं बच्चे। छठे में जो बच्चे हैं सोशल मीडिया के प्रोज और कॉन्स पे डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये फ्यू एक्टिविटीज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसे तमाम एक्टिविटीज इस सेंटर में होते हैं जिससे बच्चे फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम आउटकम्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो और सबसे इफेक्टिव चीज हम लोगों को दिखता है कि इस सेंटर्स को हम यूजुअली ऐसे जगह बनाते हैं जहां पे 4-5 स्कूल्स का 1 किलोमीटर रेंज में 4-5 स्कूल्स रहते हैं, 1-2 किलोमीटर के, जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और 2-3 अपर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल। तो 2 किलोमीटर के रेंज में जितने भी 5-7 स्कूल्स होते हैं उनके लिए एक क्लस्टर लाइब्रेरी की तरह काम करता है। दूसरा चीज, सिंस इसके डिजाइन वगैरह को काफी हद तक देख के फ्यूचरिस्टिक टाइप डिजाइन दिया गया है, एक पुल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है। अलग अलग एक्टिविटीज बच्चों को अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, बच्चों को अपने डिमांड के हिसाब से हम अवेलेबल कराते हैं। तो इसलिए इसमें पुल फैक्टर है, रादर देन हमको पुश करना पड़े कि बच्चे को जाके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करना। तीसरा, ये जो है एक फलक्रम की तरह काम कर रहा है। जैसा मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन में लर्निंग लेवल जो है बच्चों का वो अनसेटिस्फैक्टरी है, पासिंग परसेंटेज काफी पुअर है। तो उस चीज को देखते हुए हम लोगों ने इसको फलक्रम की तरह लेके एक प्रोजेक्ट सफल हम लोगों ने लॉन्च किया, और उसमें जितने भी बच्चे जिनका हाफ ईयरली में या फिर प्री बोर्ड में काफी कम मार्क्स आता है, उन लोगों को हम इसमें फुल टाइम एक्सेस देते हैं, और इसमें अलग से रिसोर्स पर्सन भी प्रोवाइड करते हैं, जिस 15 ईयर्स पेपर उनको कराया जाता है और भी काफी पर्सनल अटेंशन दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे बहुत सारे स्कूल में जिनका पासिंग परसेंटेज पहले बहुत पुअर होता था और बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, वो सारे बच्चे इस बार अच्छे से, पिछले सेशन में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। इसके साथ साथ जो मैंने बताया कि क्लब बेस्ड एक्टिविटीज हैं वो कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करती हैं। पहले जो बच्चे अपना नाम को, अपने इंट्रोडक्शन को मतलब कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दे पाते थे, अभी वही बच्चे हमारे इवन लर्नेड CS सर आए थे कुछ टाइम पहले, उनके साथ प्रॉपर सवाल जवाब करते हैं, अपने डिमांड्स रखते हैं। तो बेसिकली एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है बच्चों का वो काफी बढ़ता हुआ दिखता है। और जैसा मैं बोल रहा था कि नॉलेज और लर्निंग का जो एक कल्चर था जो मिसिंग था पहले, अभी वो कल्चर काफी हद तक मतलब जनरल डिस्कशन का पार्ट बनता जा रहा है। लर्निंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसके ऊपर डिस्कशन होता है,
डाइनिंग रूम में डिस्कशंस होते हैं कि किस तरीके से बच्चों को हम आगे बढ़ाएं। तो बेसिकली वो जो कल्चर मिसिंग था, वो कल्चर अभी दोबारा से पनपता हुआ दिख रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस टाइम पहली बार हुआ कि हमारे जिस सब डिवीजन में ये सेंटर है, उस सब डिवीजन से 4 बच्चे, फर्स्ट टाइम हुआ कि 2 बच्चे आईआईटी में, 1 बच्चा एम्स में और 1 बच्चा कोई एनआईटी में सेलेक्ट हुआ। तो बेसिकली नाउ दे आर एक्टिंग एज रोल मॉडल। और जो बच्चे कल तक सोचते थे कि उनके लिए ये चीज काफी इम्पॉसिबल टाइप है, अभी उनको ये चीज पॉसिबल लगने लग गया। नेक्स्ट, इसमें सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें तो कोई भी इनिशिएटिव उतना ही अच्छा माना जाएगा जितना वो सस्टेनेबल होता है। तो इसमें सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डे 1 से इसमें 4 पिलर रखे हैं। फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से रेडी करके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। उसमें फिर एक एनजीओ को हम रोप इन करते हैं, जो लोकल एनजीओ होता है, जिनका काम होता है रिसोर्स पर्सन प्रोवाइड करना फॉर क्लब बेस्ड एक्टिविटीज। तो जैसे हमारे यहाँ पे नेशनल पार्क है, वहां पे फील्ड बायोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो सीएचसी पीएचसी में काम करते हैं, ऐसे करके, और कुछ गवर्नमेंट स्टाफ होते हैं, कुछ लोकल टैलेंट बैंड वाले हैं, उन लोगों को मर्ज करके हम एक प्रॉपर ग्रुप बनाते हैं रिसोर्स पर्सन का। और इस एनजीओ का काम ये होता है कि उन रिसोर्स पर्सन को सैटरडे संडे लेके आके उस लाइब्रेरी में, इस सेंटर में बच्चों को जो भी डिसिप्लिन वो सीखना चाहते हैं उनको सीखने देना है। और उनको रिसोर्स पर्सन को बदले में हम लोग कुछ सोवेनियर टाइप दे देते हैं, जैसे एनएलसी का की रिंग होता है, टी शर्ट होता है, कैप होता है, ताकि उनको भी आने के लिए एक इंसेंटिव रहे। इसके साथ साथ जो मेंटेनेंस का इशू आता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं उसमें मेंटेनेंस एक काफी पेनफुल एरिया होता है, तो उसको देखते हुए हम लोगों के यहाँ तो ऑयल इंडिया का यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है, उन लोगों से बात करके सीएसआर में मेंटेनेंस का एक ईयरली हम लोगों ने क्वांटम रखा हुआ है, कि ताकि लाइब्रेरी में अगर मान लीजिए बुक्स की कमी होती है, कल को कुछ लाइट्स खराब हो जाती हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक मेंटेनेंस का कॉर्पस रखा हुआ है। ये तो जब है जब हम सारी एक्टिविटीज को और यूजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं। अगर इस तरीके का सीएसआर में हम किसी को रोप इन नहीं कर सकते तो हम ग्रेडेड मेंबरशिप फी भी रख सकते हैं। जैसे कहीं कहीं हमारे किसी सब डिविजन में, मैं आगे दिखाऊंगा कि ऐसे टोटल अभी 4 सेंटर्स हैं हमारे, तो किसी सब डिविजन में जहां पे सीएसआर में हमको रोप इन कर नहीं सकते थे, वहां पे हम लोगों ने ग्रेडेड मेंबरशिप फी रख दिया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कम रखा, जो दे सकते हैं उनके लिए ज्यादा रखा। तो इस तरीके से ग्रेडेड मेंबरशिप फी भी रख सकते हैं। और चौथा चीज कि इसमें Sunil, I'll just like to remind, we are running short of time, so please summarize it. Sir, I'll just take 3 to 4 more minutes, sir. Okay. So, and day 1 से हम लोगों ने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। इसमें स्टार्टिंग से ही लोगों ने काफी कुछ डोनेट किया, किसी ने वुड डोनेट किया, किसी ने बुक्स डोनेट किए। तो बेसिकली इससे कम्युनिटी डोनेशन से, क्राउड फंडिंग से कम्युनिटी ओनरशिप आ जाता है इनिशिएटिव को, जो इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी ऑफिसर रहे उस इनिशिएटिव को सस्टेनेबल रखने में मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड। रेप्लिकेबिलिटी की बात करूंगा तो बहुत ही इजीली रेप्लिकेबल मॉडल है। हर जगह हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं लाइब्रेरीज के, उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी फ्लोरिंग, उसकी सीलिंग, उसकी लाइटिंग, थोड़े से फर्निशिंग हम अलग तरीके से कर दें ताकि वो अट्रैक्टिव हो जाए और बुक्स अवेलेबल करा दे। तो यही, और एक लोकल एनजीओ को हमें रोप इन करना होता है। ये चीज करने से हम इस चीज को रेप्लिकेट कर सकते हैं। कॉस्ट भी काफी मिनिमल है। अगर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होने से 10 लाख के अराउंड कॉस्ट में हम लोग इसको कर पाते हैं। इसमें छोटे छोटे 40 सेकेंड्स के 2 वीडियोज हैं जिसको मैं प्ले करना चाहूंगा, उसके बाद से वी विल कंक्लूड दिस प्रेजेंटेशन।
Next. और इस चीज को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने बजट प्रोविजन में भी ऐसे सेंटर्स डेवलप करने के लिए प्रोविजंस रखे हुए हैं। तो लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये एक ऐसा सेंटर है जो सिर्फ बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं देता है, पढ़ने के साथ साथ सपने देखने का और उसको साकार करने का भी ये मौका देता है। थैंक यू वेरी मच। So any questions from the audience? My name is Maria Siti Zwali, 2014 batch IAS, and we really appreciate the initiative because we Northeast are lagging behind in development in every spheres of life, be it health, education, and anything. And I appreciate the DM of this good initiative for opening our eyes, and I think we can replicate in our state. I come from Mizoram. My name is Maria Siti Zwali. Now I am Director, Administrative Training Institutes. Thank you. Thank you, ma'am. Hello. I'm Bimal Rai from Sikkim ATI, Director, belong to Sikkim Civil Service. So you have done a wonderful job and we would like to replicate this in our state also. So right now we are using this CSR fund in different ways. Now we have learned that, I've seen also that we can use to replicate the establishment of libraries and the facilities to the student of far-flung areas, just like this Sanglang also. So we have also remote areas also there, many remote areas where the light is not, power supplies are not regularly available. So we may also now use this solar energy, etc. by using such type of CSR fund. So you have opened our eyes also. Thank you. So with this, we conclude the session, and thank you, Sunil, for this beautiful initiative. In fact, your library, it reminds me of a book cafe launch in Khan Market. It's nothing less in terms of aesthetics also, what you have created in far-flung areas of Arunachal. So hats off to you for this spirit. And so we conclude the session. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. And to do the honors and present a memento to Naveen sir, I'd invite Professor Rakesh Singalji. Thank you. Thank you very much. And now we are having a tea break of 15 minutes. So come back re-energized. We'll be having another session which would be chaired by Shri Alok Gupta ji, Principal Secretary, AR, Government of Rajasthan.
And during this tea break, the IAS probationers can interact with Sri V. Srinivas. So that's an opportunity for you all. In boardroom, this interaction will take place in the boardroom. Thank you. We'll be meeting after 15 minutes. हेलो हेलो बुरहानपुर, आप माइक ऑन करें प्लीज, एक बार ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं आपका। सर हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आप बोले प्लीज। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक, ओके। सर इसमें कुछ प्रेजेंटेशन शो करना है क्या? हेलो सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है सर हमारा? हाँ आपकी आवाज आ सर रही ऑडियो है। वीडियो मिल पा रहा है आपको? सर इसमें प्रेजेंटेशन भी शो करना है क्या कुछ? नहीं, प्रेजेंटेशन हम लोग जब आपका सेशन रहेगा तब रन करेंगे, तो वो आपको दिख जाएगा। आप ही रन करोगे सर आपके एंड से? हम लोग आपका प्रेजेंटेशन रन करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर।
मेरा वीडियो ऑन करो।
सर बुरहानपुर से आडी उडी मिल रहा है सर? सर बुरहानपुर से आडी उडी मिल रहा है? बुरहानपुर से आडी उडी जी सर, आपका क्लियर है ऑडियो? सर ऑडियो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है? हाँ सर, आपको क्लियर मिल रहा है ना सर आपको? वीडियो नहीं आ रहा आपका? वीडियो नहीं आ रहा? नहीं। आप बताएं। अभी मिला सर? सर आपने मोबाइल से लॉगिन किया हुआ है? हाँ सर, टेप से किया ना, इसी से करेंगे आप प्रेजेंटेशन, बातचीत? हाँ सर, बातचीत इसी से होगी सर। ठीक है, आप एक बार वीडियो स्टार्ट कीजिए सर आपका। सर ये किया है मैंने अभी। शो नहीं है। नहीं सर, अब अभी आया? अभी आ रहा है सर, अभी आ रहा है। अभी वॉइस वगैरह परफेक्ट है सर। आप ओनली से 5 मिनट ना वो मेरा सर म्यूट कर ले अभी। जी सर, म्यूट कर लीजिए अभी। Welcome once again after the tea break. And we are now going to have session number 8.
Best Practices of Government of Rajasthan. This session will be chaired by Shri Alok Gupta, Principal Secretary, AR and Coordination, Government of Rajasthan, whom I would like to invite on the dais. He's a 1996 batch IAS officer and held various important positions in the Government of Rajasthan. I'd now like to invite Srimati Neha Giri, Special Secretary, Industry, on the dais. She is a 2010 batch IAS officer, Rajasthan cadre, and electrical engineer from Lucknow, has taken up varied responsibilities as an IAS officer in her 13 years career. Srimati Neha Giri has immensely contributed for upliftment of urban sanitation, health, social field, and so on in the state. And she's a poet, a painter, a reader, and a horse rider too. And now the next dignitary to join us on the dais, I'd like to invite Srimati Anandi, Secretary, Information Technology. We now invite Shri Bhagwati Prasad Kalal, DC Bikaner, Rajasthan, on the dais. MSc Mathematics, he has served through varied important positions in the Government of Rajasthan and has won many awards for his extraordinary endeavors. We'll be giving a floral welcome to our distinguished guests on the dais. Pragati Asopa is requested to welcome Shri Alok Gupta, Principal Secretary. I'd make a request to Srimati Surbhi Singh, Sahayak Nideshak, CGG, to present a bouquet to Srimati Neha Giri and a bouquet to Srimati Anandi. और आमंत्रित करूंगी श्रीमती विनोद कुमारी, लेखाधिकारी, जो अभिवादन करेंगी श्री भगवती प्रसाद कलाल का, जिला कलेक्टर बीकानेर. And now it's over to you, Shri Alok Gupta, the chairperson of this session, Principal Secretary, AR. बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है. गुड गवर्नेंस पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और कल सेक्रेटरी सर वी श्रीनिवास जी ने बताया था कि गुड गवर्नेंस के क्या कंपोनेंट्स होते हैं. इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, ईज ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस रिट्रेसल. पब्लिक ग्रीवेंस रिट्रेसल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस. और राजस्थान में भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए किस तरह से पब्लिक ग्रीवेंस रिट्रेसल को हम लोग हैंडल कर रहे हैं, इस बारे में मेरी कलीग आनंदी और भगवती कलाल, कलेक्टर बीकानेर, आपसे शेयर करेंगे उनकी एक्सपीरियंसेस एंड हाउ वी आर डीलिंग विद इन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. अनदर इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज आई स्टार्ट टू प्रमोट young entrepreneurs. A new program, iStart, has been launched by Government of Rajasthan, and now it has been extended to rural areas and schools also. Neha Giri, a young bright officer of Rajasthan cadre, is going to explain to you how this program is being launched and how these activities are being carried out. Now, without wasting much time, I would request Neha Giri to start her presentation. A very good afternoon to esteemed guests, dear colleagues. I'm going to give a presentation on iStart program. This is a flagship initiative of Government of Rajasthan. And I would like to tell you one thing here before starting, that we are literally very close to iStart program as such. If you see, when you are coming over here, there is a techno hub which you might have seen. It is just opposite to the Rajasthan International Center. It is one of the infrastructure which was built under this program. Advent of the digital era has democratized entrepreneurship. Ease of launching and growth of digital ecosystem has led to the mushrooming of successful startups across the country. This phenomena presents a
unique opportunity for Rajasthan to spread the spirit of entrepreneurship to grassroots level. Startups thus become a natural focus area to advance the state's agenda of empowering the youth to build leaders of tomorrow. Rajasthan, with its history in entrepreneurship, intellectual, and human capital, is on the path to emerge as a center of innovation and business activity. The state is striving to build a conducive ecosystem for startups to promote innovation, create new products and services, generate employment, and thus strengthen the regional and national economy. To further ignite the spirit of entrepreneurship in the state and convert ideas into business, the state government has launched iStart, the flagship startup program under the Department of Information Technology and Communication, which has enabled growth for over 2,000 associated startups. It is one of the most recognized state-run startup ecosystems in the country and has won awards such as CSI Neeland E-Governance Silver Award 2018, 4th Business World Digital India Summit Awards 2018, Top Performer in the DPTI State UT Startup 2018, and Leader in Startup Ranking 2019. In recent years, the state has fostered sector-agnostic innovations and has witnessed tech-driven startups creating their mark in India and internationally. With a vision of becoming the entrepreneurial and innovation hub of India, the state has framed Rajasthan Startup Policy 2022 to provide greater impetus to nurturing and growth of startups across the state. Next slide, please. Now, if you look at the major key features of the Rajasthan Startup Policy, I've categorized into, I've taken 7 basic points of the policy, which is to expansion of state-run and managed incubator, covering at least divisional headquarters via hub and spoke model. Hub and spoke model is basically, hub is a centrally located facility with its hard and soft infrastructure, which provides support to the spokes in the divisions, establishing an AIF fund, which I will tell in detail later, scale up fund for growth stage startups, which is up to 2 crore, grant of 35 lakhs to incubators, investors to run accelerator program. All these terms I'll be telling in detail in my presentation. Facilitating procurement and procurement orders based on Q8 store, special category for startup for open source procurement up to 2 crores. Now, if we look at the iStart ecosystem in Rajasthan, we can categorize into 4 major columns. First is accessibility, second is funding, third is support, and fourth is partnership. So there is an online registration for startups. You apply for grants. There is a document library, and Q-Rate, which is a startup scorecard, and plus there is a startup policy, which I have told in my previous slide. There is funding, which has different components, and there is support, and then there is partnership. This is just a snapshot of the ecosystem in Rajasthan. Now, this, I would like you to have a very careful look at this slide, because it basically tells you about the ecosystem for youth, which we have developed in this iStart program. We have different type of institutes which we have planned, as well as some have been launched, which comes under this iStart program. So first is Rajiv Gandhi Center of Advanced Technology, which is a technology finishing school. It provides the youth access to quality courses that will enable to become employable. Its hub is in Jaipur. It is divisional center at Jodhpur, Kota, Udaipur. It is operational. And third is at Bharatpur, Ajmer, and Bikaner, which are under development.
Second is the Rajiv Gandhi FinTech Digital Institute, which is driven by a bold and futuristic vision by the government of Rajasthan to develop a niche and focused higher education institution in the FinTech space. And this addresses the emerging technical requirements, which is competency in artificial intelligence, blockchain, and which might also focus on software aspects such as soft skills and cultural fit. Third is the Rajasthan Institute of Advanced Learning, which has taken numerous initiatives in recent times with the aspiration to become a knowledge-driven economy. The state government has made this budget announcement. And this is proposed to be a world-class state-of-art training cum research and development center, which will be equipped with futuristic labs in the areas of advanced technology. So these institutes program will be positioned with a curriculum structure that follows the best technology institute of the globe, leading towards super specialization in the subject. The faculties, advisory panel, and think tank of the institute will be consisting of the leaders in technology, startups, and top educationists worldwide. Now, if we look at what are actually the benefits which will be provided to startup by this iStart Rajasthan program, we can categorize them into 4 parts. First is incubation, second is funding, third is procurement, and fourth is outreach. So first I will tell you about the incubation stage. So the incubation center provides space, mentorship, exposure, and resources like high-speed internet, data center, furniture, recreational area. So thus taking innovation at the doorsteps of the Tier 2 and Tier 3 cities of the state, giving the aspiring youth in these cities an opportunity to take up entrepreneurship as an vocation. The state-owned incubation centers is Techno Hub, which I have told earlier at Jaipur. It has an incubation capacity of 400 iStart Nest branches at divisional headquarters, Kota, Udaipur, Bharatpur, Bikaner, Churu, Jodhpur, and Pali, which are upcoming. Techno Hub is among the largest startup hub in the country with an incubation space of 150,000 square feet, offering state-of-the-art amenities like video conference room, individual and shared offices, committee halls, etc., along with the tinkering labs providing an experimental space to innovative young minds and think tanks. Apart from this, we have iStart Virtual Incubation Program. During the pandemic, to help the state-supported incubators, we went virtual, and iStart Virtual Incubation Program was launched on 20th August 2021. So since its initiation in the year 2021, iStart has organized more than 50 plus virtual mentorship workshops under Virtual Incubation Program in collaboration with academic and corporate partners. There has been registration of 1,000 plus entrepreneurs, startups have been received for the iStart Virtual Incubation Program so far. So this is the what comes under incubation. I've given you a brief overview of it. Now we have to look at the funding, and this is a very interesting part, that we have gone much beyond what the funding is provided, because we have compared it with the other programs which are running similar programs in the country, and we are funding it from the pre-stage to the actualization of the startup. It runs and it generates a business. So we have divided our funding according to the cycle stages of startup. One is the pre-seed and seed stage, and second is the growth stage. And you must have seen in the previous slide, if you see, there was a Q rate scorecard. So what is the Q rate starting? The Q rate starting is that provides detailed assessment report on startup's potential and investment worthiness. So the rating is based on that assessment score and varies from bronze, silver, gold, platinum to signature. So these categorizations have been done because the startups which will be in these categories will be given grants. The amount is different.
The bronze is it's different from what you get in a signature. Then at pre-seed and seed stage, we have ideation grant for pre-seed stage startups, which is up to a grant of 2.4 crore, 2.4 lakhs. And startups which have more than 40% equity with women founders, they are provided an additional 60,000. Second is a viability grant for seed stage startups, where the incentive applies only to seed stage startups. And at the growth stage, we have scale-up fund, which provides financial support to growth stage startups through scale-up fund of up to 2 crores. So this fund will be provided as a debt convertible to a grant. We also have startup equity fund. It is by the name of Alternative Investment Fund. It provides funding support to startups in the form of equity, and the government will match the amount of fund raised by the eligible startup, and it is up to 5 crore per startup. We also have additional boosters. What are these additional boosters? These are performance boosters, employment booster, product-based startup booster, trust boosters. They are separate boosters for women, transgenders, specially able founders, and founders belonging to SC, ST, and rural areas. There is also incentive for incubator and academic institutions. There is an acceleration program support where we provide funding of around 35 lakh, institutional support of around up to 15 lakh, and we also have a component of global partnership with premier institutes where 5 crores have been allotted for it per year. Now we come at the third categorization in this, the benefits, which is procurement. So this is very different in the way that we have not only enabled the startups, we have not only provided a conducive environment to the startup, we have also taken hand-holded them in a way that they get assured business from the government itself. So procurement, we have e-bazaar for startups, where we have additional work. We provide them additional work through e-bazaar, and the government departments can procure from these startups of order of around up to 15 lakh, including taxes. And the startups recognized by the iStart Rajasthan program, they can be given direct work orders of up to 25 lakh by state government departments. So this is a recent budget announcement of 23 and 24. And startups which are evaluated according to the Q-rate program, they are eligible for higher orders. And one additional work order per year are awarded to startups that are led by women, specially abled, or transgenders, or founders belonging to SC, ST. So we have ensured that the sectors which are needed to be, there needs to be upliftment. So we've ensured that we have kept that at every stage of our startup policy. There is also special procurement related provision under RTPP, which is Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012. So there is a provision for open source procurement of all goods and services up to 2 crores, wherein only startups would be allowed to participate. And the government has also relaxed procurement norms in this act. And third, is the challenge events in collaboration with the private sector promote startups in the sports, where the winners will be provided a matching share equal to the amount sanctioned, and 4 startups have been awarded in the sports hackathon. Coming to the last which is the outreach. So the outreach involves basically the networking, the exposure trips, and the visits and the investor summits. So where in this we have tried to provide startup with the best of the industry experts so they can get the practical insight from them. And the iStart has partnership with industry experts, academia, and corporates. There's partnership with venture capitalists, angel investors, national and international incubators, accelerators, and startup promotion platforms, startup ecosystem at national and international level.
And we also have a Campus Connect program. We also have a iStart brand awareness program. We have sensitization program across division headquarters. And there is a flagship youth and entrepreneur focused festivals, hackathons, ideathons, startup exhibitions, investor pitches, demo delays, expert summits, talks, etc. There is a Spotlight program, which is an expert-based capacity building activities for startup across various districts. There's also a Global Exchange program, where select startups, they undergo training and exposure at international institutes, and students from other institutes are also hosted in Rajasthan for trainings, community learning, and interaction with startup community in the state. Last but not the least, there is capacity and skill development, where we have training and upskilling centers, and they undergo skill and talent upgradation at our institutes, such as Rajiv Gandhi Center for Advanced Technology, Rajiv Gandhi FinTech Digital Institute, and Rajasthan Institute of Advanced Learning. So this is the brief of what I've been telling. So these are the state-owned incubation centers. This is a map of Rajasthan, and you can see that the picture in the map is of Techno Hub, which is just across this Rajasthan International Center, and we have different. We have RCAT at Jaipur, and we have iStart, Nest, and branches. So this Techno Hub is a digital museum. What do you mean by digital museum? It utilizes information technology on cultural relics and historical collections that can be preserved and displayed in digital form at Techno Hub. And this facility has become a popular tourist attraction. So if you have not visited still, so we can organize a visit for you also. So if it is just, it seems interesting to you. And it has helped in increasing awareness for initiative technology, interactive technology, and it helps user to understand and experience different technologies. Now, we have not only provided an ecosystem for youth who are interested just to having a business idea. We have tried to inculcate from the very start. So we have these iStart school and rural launch pads, where we engage, where we have school launch pads across 33 district schools, and rural launch pads across 33 district colleges. So these pictures are only for illustrative purposes. We have these upcoming programs, so it is still in the pipeline, but we will be seeing it in real very soon. So right, okay. So if we look at the sectors where we have been able to, what are the emerging sectors? So the emerging sectors where the thrust sectors are there: in agriculture, education, fintech, healthcare, SaaS, which is software, and green areas, and sunrise sector. So if you look at the table which is given in the slide, so we have able to provide, we have the statistics are from eBazaar, 300 total iStart seller, and work orders of around 38, and it is around more than 56 crore, 5 crore 65 lakh. So it is more than the orders have been given. Once again, I would like you to go to the, in fact, the previous slide. So if you look at this, this is a program, this is a joint program between Department of Information Technology and Communications and the Department of Education. And through this program, the state envisages to establish and running of incubation centers in 9 academic zones. It would prepare the students in the state, including students attending in the ITIs, polytechnics, and colleges on the aspect of entrepreneurship and innovation.
So select mentor teachers and professors from around 33 districts. Now there are 50 districts though. So have been trained towards nurturing ideas of student entrepreneurs, and we have iStart School Portal, we have iStart School Innovation Challenge. We also have awards, incentives for top teams who present their ideas at the district and the divisional and the state level. We also have exposure visits for them. And till date, if we wanna just understand this whole iStart School program, so around 30,000 the students are on board this program, and around 1,800 plus schools have they are on board this. More than 1,700 student team has been registered, and we have more than 130 mentor teachers and professors. More than 50 iStart School Innovation Challenge awardee students, they have been awarded, and around 20 lakh award money have been given. And we also have rural iStart program, which is open to women's self-help groups, producer companies, cooperatives, rural innovators, startups, small village entrepreneurs or businesses, and women entrepreneurs or individuals. We also have iStart a Rural Innovation Challenge, where we seek to transform agriculture and rural development in Rajasthan. So in this, if you look at the stats, we have around 23 awardees, and 23 people have been awarded, individuals or the teams, and around 20 lakh have been given as award money through iStart Innovation Challenge. So this is the pictures of the Rajiv Gandhi Innovation Award, and 11 startups have been awarded till date, and award money of around more than 6 crores have been given. And these awards are being issued to startup entrepreneurs, MSME, so who participate in the challenges. So this is basically how they participate is they develop an out-of-the-box solution for addressing issues prevailing in the society or state, and then they come up with their own problem statement relevant to the theme, and awards are being given where up to 5 crores, and runner-up are issued 1 crore and subsequently. So there's also a Rajiv Gandhi Innovative Active Challenge, where the challenge it runs actively throughout the year. So there's a small video I would like to show. This is regarding Fleeka, which is one of the success. We have lots of success stories. So this is one of the startup which has been hand-holded by the government of Rajasthan. So this is a very short video. How to play with it? Can you help? There is a link. There is a link. You just click on the video, registration video. It opens an external link. Jaipur-based company founded in 2016 by Mr. Tikam Jain with the objective to provide India's best tire management and retail services. Currently, Fleeka operates in 17 states with more than 450 Fleeka centers to enroute tire management for people.
Thank you. There's 2 more slides left. Can you just go back to that? Yes. So this is these are our key milestones. If we want to see just in a snapshot, more than 4,000 startups have been registered, around 2,000 curated. We have around 9 incubation centers. More than 160 events have been organized regarding outreach, mobilization, flagship events, and startup events. More than 700 crore funds raised, more than 30,000 jobs created, around 1,308 women-led startups, and we have around 19 non-academic partners, 15 academic partners, and 13 partner investors. And around through them, more than 30 crore investment have been raised. So now what is the way forward? Way forward is enhancing structure, which is constant improvement grows towards physical infrastructure, technological resources, mentorship programs, and networking opportunities. Enhancing funding, that is to create a bottom-up approach towards a collaborative investment ecosystem, create regular investment workshops across the state, to educate individuals towards startup investment as an alternative asset investment class. Revenue generation, it is to enhance procurement so as to support in the increase of revenue for startups. Regulatory requirements, that is removing regulatory hurdles and complex tax structures. So just before saying my concluding this presentation, I would just reiterate in the way that it is a stakeholder beneficiaries program for startups, student entrepreneurs who are studying in class 8 to 12, ITIs, polytechnics, colleges across Rajasthan. It involves mentor, teachers, and professors, maybe from either from school or from colleges. It involves academic institutes, venture capitalists, investors, incubators, accelerators, corporate and financial institutes, women self-help group, producer companies, cooperatives, rural innovators, individual and SM. So we have tried to involve all of them, and we have tried to raise a very successful model in Rajasthan, where we are continuously improving it and trying to achieve newer heights. Thank you for giving me opportunity to present this iStart flagship program. And since it's a Department of Technology and Communication flagship initiative, and I'm an industry representative, but since it falls in Government of India, so I have also thoroughly researched in the past few days when I was allotted this, and I would surely say that Government of Rajasthan is on a very right path, and we're always open to improve upon it and learn from best practices across the country. Thank you. Thank you, Neha, for a very detailed and comprehensive presentation. I'm sure with this initiative, we're going to see many unicorns in near future in Rajasthan. And I'm also sure this will improve the culture of innovation in entrepreneurs in rural areas and also in the schools among children. But also urge all the delegates to kindly spare some time, as Neha said, to spare some time and visit Ramashek Techno Hub, which is just across the road. We can facilitate the visit. Anandi is here, Soni is here, when Neha can facilitate. I would request you to just have a look at that. Now, if you have any questions on this initiative, anybody in the audience? A definition of startup. So according to the, because we have taken all these terms as been defined in our policy, Rajasthan startup policy. So we define startup as a, we have taken it as a business idea, which is to be developed by a team or a number of individuals. And we have made a ceiling to that business idea according to the investment that is needed for raising up that business idea. So this is how we go about in Rajasthan. So there may be other general terms, but this is that
hand-holding of a business idea and transforming it into a regular revenue generation model through different enabling supports and financial incentives we had made in the policy. So this is how we, though there may be other definitions, but this is how we have taken up in our startup policies. To supplement what Neha said, it has to essentially be a company which is under 10 years, within 10 years of its incorporation, with any new ideas. चेयरमैन, थैंक यू मैडम, आपने अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरह रखा कि राजस्थान के अंदर स्टार्टअप की पॉलिसी क्या है और उसका क्या रूप है। क्योंकि ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं अभी स्टार्टअप G20 प्रोग्राम में था जो जयपुर में भी हुआ था और मुझे गोवा भी जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पाया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आता है कि जो रूरल एरियाज है, 60% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है राजस्थान के अंदर, और उसकी जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियलिटी इतनी हाई है कि हम उसको इंक्लूजन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो रूरल स्टार्ट प्रोग्राम है उसको किस तरह एक्सेस किया जाए कि जिससे कि जो रूरल एरिया डोमेन है, जो इनबैलेंसिंग सिस्टम है, उसको कैसे एनहेंसमेंट किया है, इसके ऊपर क्या एक्शन प्लान राजस्थान का होना चाहिए, जिससे कि रूरल एरिया की एक्सेस टू एनवायरमेंट, एक्सेस टू वाटर, एक्सेस टू एनर्जी, एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज and access to technology for the economic development of Rajasthan. आपका क्वेश्चन बहुत वाजिब है और जैसे मैंने इस प्रेजेंटेशन के थ्रू भी बताया कि आई स्टार्ट प्रोग्राम जो है वो सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेट या बहुत एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन से आने वाले यूथ के लिए नहीं है। इसके कई कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम स्कूल प्रोग्राम भी है और स्कूल प्रोग्राम में रूरल जो आई स्टार्टअप प्रोग्राम है वो भी इसका एक कंपोनेंट है। आपने कई सारे सेक्टर्स की बात करी है, जैसे एनर्जी की बात करी, तो इसमें हमारे कुछ थ्रस्ट सेक्टर्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इंडस्ट्री है। तो इन सबको लेते हुए ही रूरल आई स्टार्ट प्रोग्राम भी है और वो उसकी संरचना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारे आई स्टार्ट फ्लैगशिप प्रोग्राम का वो एक कंपोनेंट ही है। और ये धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी हमारे इंक्यूबेशन सेंटर इसका माने ये है कि एक ऐसी फैसिलिटी जहाँ पर मेंटरशिप के साथ साथ एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है ताकि स्टार्टअप ग्रो कर सके। तो अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम पहुंच गए हैं। डिवीजन लेवल पे हमारे बड़े मेंटरशिप, हमारे जो मैंने हब एंड स्पोक मॉडल की बात करी, तो हम स्टेट से डिवीजन पे पहुंचे हैं और डिवीजन के थ्रू डिस्ट्रिक्ट पहुंचे हैं और डिस्ट्रिक्ट के थ्रू ही हम जो रूरल जो एरियाज हैं वहाँ के स्टार्टअप जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे इंक्यूबेशन सेंटर अभी तक बन के तैयार हैं और कुछ अपकमिंग है। हमने जो मैंने एक बात कही कि हम सिर्फ यूथ पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पे भी ध्यान दे रहे हैं 8th से लेके। तो जो चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, जो हमारा रूरल आई स्टार्ट प्रोग्राम भी है, तो हम काफ़ी सारे बच्चे, जैसे मैंने बताया, मोर देन 51 स्टूडेंट्स हैव बीन अवॉर्डेड। बच्चे आ रहे हैं, उनका बिजनेस आइडिया सेलेक्ट हो रहा है, उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं। अभी हो सकता है इतना पेनिट्रेशन इस चीज़ का नहीं हुआ हो, तभी आपकी जानकारी में नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे हमारा यही है कि सारे ही हम राजस्थान में सभी जगह जहाँ जहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट के बियॉन्ड भी अपने जो इंक्यूबेशन सेंटर हों, चाहे हमारे इस तरीके के प्रोग्राम के लिए आई स्टार्ट नेस्ट की जैसे मैंने बात की या रूरल लॉन्च पैड की बात करी, तो हमारे इस्टेब्लिश होंगे। क्योंकि ये एक बहुत न्यू प्रोग्राम है। 2015 में ये एक इंडस्ट्री के तहत पॉलिसी थी जो काफ़ी ज़्यादा नए रूप में 2017 में आई और ये इम्प्लीमेंट हुई। तो अब इसमें धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया कि वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इसमें जोड़ें, चाहे बच्चों को जोड़ें, यूथ को जोड़ें। रूरल एरियाज़ में भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप आइडियाज़ जो हैं हम उसको उनकी हैंड होल्डिंग करें। तो अभी ये कार्य रुका नहीं है, ये कार्य लगातार चल रहा है
और आपने जो कहा है कि सबको ही, जिसको भी जरूरत है, जो भी सोच रहा है, हम यही नहीं कर रहे हैं कि आपको जरूरत है आप हमारे पास आ रहे हैं, हम सीधे आपको एक तरीके से अवेयर करने हैं कि बिजनेस भी एक तरीके का ये एक मॉडल है जिसमें आप हमारी तरफ से हैंड होल्डिंग, पूरी फंडिंग से लेके मेंटरशिप से लेके क्या किस तरीके से आपका मॉडल सक्सेसफुल होगा और किस तरीके से आपको बेसिकली जॉब तो नहीं, एक जॉब रिलेटेड जो सैलरी की बात होती है या एक प्रॉफिट की बात होती है, वो आप मॉडल, आपको एक एक्सेप्टेंस भी हो और आपको उसमें कन्विंसिंग भी हो, तो ये सारा चल रहा है। और आप देखेंगे कि आगे आने वाले सालों में ये रूरल आई स्टार्ट प्रोग्राम भी उसी लेवल पर आ जाएगा जैसे कि आप अर्बन एरियाज में देख रहे हैं, और ये कंटिन्यूस चल रहा है। जैसे मैंने बताया वो स्कूल के भी वो इलस्ट्रेटिव पिक्चर है, ये अभी बनाया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि इनकी एक पूरा तैयार होके और ये भी आपको लॉन्च पैड स्कूलों के भी आपको रूरल एरियाज में भी दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि हम अभी आप आगे आने वाले समय में इस तरीके की जब आप देखेंगे तो और मुझे लगता है कि जानकारी में भी आपके आएगा, और इसकी ज़्यादा पॉपुलर तो अपने में है ही ये फ्लैगशिप प्रोग्राम, बट रूरल मासेस में भी उसी तरीके से लिया भी जा रहा है और आगे भी लिया जाएगा। थैंक यू। बोला, अपनी बात को बहुत ही अच्छे से रखा कि जो रूरल एरियाज हैं उसका इतना पोटेंशियलिटी है, हम उसको बहुत एक्सेस करते हैं। अभी छोटी सी एग्जाम्पल था, इंडस्ट्रियल स्टेट है अलवर में, आई एम बिलोंग टू अलवर, अलवर में 15 इंडस्ट्रियल है और अब कुल मिलाकर 30 इंडस्ट्रियल स्टेट हो जाएंगे। जयपुर में 15 है, अगर हम जयपुर और अलवर की बात करें 45 इंडस्ट्रियल स्टेट बन गई, लेकिन उनको इंक्यूबेट करने की जो फैसिलिटीज है, उनको एक्सेस करने की इतनी सारी योजनाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको कैसे एक्सेस किया, क्यों ना एक फैसिलिटी सेंटर हो, इंक्यूबेटर सेंटर। इसमें एक सजेशन है, जैसे कि लर्निंग सेंटर की बात आ रही है, ऐसा लर्निंग हो, एसएमई लर्निंग सेंटर, और इन एसएमई लर्निंग सेंटर की जो एसएमई को सारी चीज बताया ए टू जेड, चाहे एनर्जी हो, एनवायरमेंट हो, मिलेट हो, फूड प्रोसेसिंग हो, कंप्यूटेशन हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, so many things are there. लेकिन where the incubator grassroots, this is neglected, so it should be one of the part of the activities. Thank you. We are running short of time, so from iStart we move to the next presentation, public grievance redressal, which is a very important component of good governance, and how we are handling with public grievance redressal in Rajasthan and how we are providing relief to citizens of Rajasthan through technology. Now I request my colleague Anandi, a very distinguished officer, to present about Jan Sampark in Rajasthan. Good afternoon, everyone. Before I begin, I'd like to thank Kalu Gupta sir for this opportunity. To be very honest, both our presentations could easily have been done by sir, since he's our predecessor in his capacity as Principal Secretary, Department of IT. He has spearheaded all these programs, and it's very kind of him to give us an opportunity to present it instead. Thank you, sir. So today I'll quickly take you through a few of the initiatives of this government of Rajasthan, some of the pioneering initiatives, in fact, to not just bring more efficiency in service delivery, but also to try and reach out to the last citizen at the grassroots. If I talk about the entire architecture of service delivery through information technology in the state of Rajasthan, these are the 4 pillars on which it can set to be standing. The first one is the eMitra, which is a citizen service center, and I will be explaining to you in a little bit of detail about that. And then Sampark portal, which is the topic of discussion specifically today. So I'll be delving into detail about the Sampark portal while touching upon all the others as well. The Jan Aadhaar, which is basically a repository of all the families that live in the state of Rajasthan. So we have a very robust, very up-to-date repository which we use for delivering many services. And then Jan Suchna, which is a portal, one of a kind portal for implementation of the Right to Information Act. So essentially, all 4 of these things put together comprises the entire ecosystem of service delivery through information technology in our state. So eMitra is essentially, as I mentioned, a citizen service center. It is a fulcrum of service delivery in the Gram Panchayats of right up to the Gram Panchayats in the state of Rajasthan. We have more than 80,000 kiosks across the state,
And over 600 services, both G2C and B2C, are being provided through these e-Mitra services. And I think the most important point to note here is that it's such an important part of service delivery that almost 1 crore people come to our e-Mitra centers every single month. So that is the nature and extent of reach of this particular service. And it has been ranked as the #1 service delivery portal by DAPRG in 2021 as well. While we have this, and this is it was a game changer the moment it came in. People didn't have to run around looking for government officials to get their little works done. This still was just one aspect of service delivery. And the other part of it, which came to the fore over a period of time, was that despite this, people still had problems, they still had suggestions, they still had demands, they still had aspirations, and they would therefore still try to reach out to government to communicate these things. And this actually came to the fore when our chief minister was once touring all the districts one by one in the state and spending about a day or two in each district. And it so happened that in every district that was visited, people came by the droves, and per district, more than tens of thousands of applications were being submitted to the chief minister. So this led to there was a huge meeting, a lot of discussion on how, first of all, do we make sure that these applications do not get lost in discussion and, because they are ultimately just paper, how do we keep a track of all these grievances, but also how to make a system which is not so CM-centric. Why should people have to always run to the chief minister for everything? How do we make the grassroots officers, the ground level officials, more accountable for their actions? And how do the seniors monitor that better? With that thought came Sampark portal. And I'll explain this in a little bit of detail. This began in 2014 with this particular incident which I mentioned. And it was decided that we need to, because it started with a portal for just sort of registering all the grievances that were coming. But over a period of time, its potential was recognized and its features was enhanced. And within 2-3 years, it was built into a portal which was integrated end to end, not just by a portal, but through all other forms of communication. We now have a 700-seated call center attending to every single call of any person who has not just a grievance, but has any suggestion or has any or seeks any information. Today we launch a scheme and they want to know, can they be beneficiaries of that? Where can they go and avail that scheme? All those things get covered through this particular CM helpline is the other name we give it, Sampark 181 CM helpline. So that's the background. Today it covers almost 180 plus departments, and not just government departments, but it goes beyond to autonomous institutions, autonomous bodies like the university and state PSUs. And like I mentioned, beyond grievances, also for awareness, and it is an extremely important tool for senior officials for real-time monitoring of every single matter that comes to the state, which comes into this portal. I think one of the most beautiful aspects of this is the way it is extremely easily accessible. People can go to the portal themselves, or they can download the app and access it, or they can just send a simple SMS or email. If none of these work, they can still go to their local e-Mitra, which I talked to you about, of which we have over 80,000, and have their issues registered there. And even if that is too difficult, they can simply call 181 and our call center executives process whatever their requests are. So in that sense, given this ease of use, it has been able to penetrate down to the last village very, very successfully. It started with grievances and demands, as I mentioned to you, but over a period of time, in addition to standardizing the process of receiving and processing grievances, there are many other modules that have been added to it. One of the most important is the concept of reality check. So there is a dedicated team in the Chief Minister's office, and it is also actually anybody can use it, any officer can use it, wherein they call back. They have a database of people who've been calling in. We've got crores of 1.33 crore people who have reached out to the government through this portal. So we have their data. So it's very easy for us to reach back to them and take feedback on the execution of any particular scheme. So typically what happens is if the Honorable Chief Minister wants to review a particular department, let's say IT department, and we have, let's say, 4 schemes. So before the review date, there will be a team which will give random calls to people and do a reality check about whatever claims I may make to the Honorable Chief Minister. And then he would have already had his homework, which will tell him that, no, you're claiming this, but then this is what the reality is. So it's sort of completely done away with the distance
between the highest authority and the last man in the last village through this reality check module. Tours of officers, it's I'm sure every state has that provision where it is mandatory to make a lot of tours, and through this portal, the feedback that the officers have observed regarding different departments is entered into this portal through the tours module. And then that is allocated to the respective department to take into account whatever feedback is coming through such inspections. And then service request is something that has been added by the department because it's a very IT driven package. Any department might have any sort of problem at any point of time. So instead of them wondering who to call, how to contact, they just raise the ticket in the service request module, and then the IT department takes care of that instantly. So as I mentioned, this is a one-stop shop which connects every single stakeholder, every single citizen with every single government official. The citizens can come here, register, share their grievances or their suggestions, and then also track it. What is happening with that? Who is holding? Who is in charge of handling that grievance? What is happening in that? Everything gets tracked in that. And ultimately, when action is taken, that is also communicated to the stakeholder, and then they have the opportunity to again give their feedback or raise a further request. In that way, it's a very seamless sort of conversation that you can have with the citizen. The call center agent that we have, I mentioned we have a 700-seater call center. This is essentially to help people who are not very comfortable with using other modes of communication. So anybody can call 181, and then the call center executive helps them route their problem to the right place. The department users, of course, there's a complete workflow because it has mapped every it is 4 stages of mapping. So every single officer from the lowest level to the highest level is mapped to it. So even superior officers can easily monitor what is the level of grievances which are pending at which level with which authority, and how long it has been pending there and why it's not moving forward. So it's made monitoring very, very easy. And you can also get customized reports. Every time you want to, so for instance, if you want to visit one particular district and see what is the status of issues pending with regard to your department, you can easily generate those reports for even higher authorities as well. This is the general workflow which I just mentioned. Citizen can easily use either SMS or kiosk or mobile app and enter their details along with the uploading any documents if they want to. And if they find that difficult, they can directly call our call center, which is 181, and register their complaint, wherein the executive takes down all the details and routes it to the right office. After this registration, there is an auto allocation process. So when we started this initially, I remember I was in the field at that time, there were a lot of complaints about how things are getting mapped incorrectly. There are an electricity department matter is going to a water department and so on and so forth. So over a period of time, what has happened is every single department has been requested to identify every kind of problem that is possible. And all of those have been listed out. So now it becomes very easy to train and train the call center executive. And now we're almost at a 0 error level where whatever calls come get routed to the right person. And as I mentioned, there are 4 levels. So the complaints that are received go to the lowest level, and they are given a certain amount of time to address it. If that is not done on time, then the levels keep getting raised. For some important issues, like if there are complaints of corruption, the supervisory officer, the collector has been designated, district collector has been designated as a supervisory officer, and he decides who the matter has to be allocated to. Once this has been allocated, then there is this workflow. Like I mentioned, the first authority who it goes to will take some action. And I think the reason why this is so successful is the fact that in every single case, the call center executive calls the person. So, the 4 categories, sir. So it starts, for instance, L1 would be a block level officer. L2 would be. So these are the 6 categories, sir. Every department has its own categories, but within that 3 we have specifically kept separately. For instance, if there are any personal issues, किसी का increment रुक गया सर, उस चीज को instead of allocating it to the lowest functionary automatically, we give it to the collector, who then decides who is the appropriate person to who this issue should be raised. So there's a space for mind application in certain important and complicated issues, sir.
So in every single case, as I was mentioning, the call center executive calls the person back, verifies with them if the problem has actually been sorted, are they satisfied? If they are not, then the call center executive is enabled to reopen the matter. We do this over 2 cycles, and then every time it is reopened, it is sent to the next higher level with a sort of flag that this is something that has been so-called addressed by your subordinate, but the person is still not satisfied, so please look into it. After 2 cycles, if the 3rd level feels that this cannot be taken care of, then at that point we close it. This is the verification process I was talking to you about. The call center executive will call the citizen. If the citizen is satisfied with whatever has happened, then it is finally disposed. If it is not, then we call it a partial closure and then reopen it to the next higher level. And this happens over 2 life cycles. So this is the sum and substance of this particular application that we have. It's very simple and easy to use right now, but it has taken years of development to bring it to this level of comfort. Like I mentioned, over 1.34 crore people have used this over a period of time. And the disposal rate is also, because of the ability to monitor it so closely, 98% disposal is where we stand at, and the remaining 2% is things which are within process. And each of these grievances have a certain time limit in which they are supposed to be disposed of. If it is not done within the time limit, it is automatically escalated to the next level. So that enables and ensures that there is a timely disposal of all the grievances. And this is a slide I wanted to share because I wanted to show you how quickly and rapidly this particular portal, this particular service has caught on amongst the population of Rajasthan. When we started it in 2014, that was the time, like I mentioned, when there was just this huge number of applications which were coming to the CM. And at that time, it was essentially just to capture those grievances. But now, after all these enhanced features and the enhanced features have been added to the portal, it has become a much more robust application. Another interesting thing is that the 181 call center, typically, we've seen a lot of dashboards, a lot of grievance redressal methods in many places. But when you do not link it with a call center, then this is the clientele you lose. Over 1 crore calls have come in, sorry, is that 1 crore or 10 crore? The 1 crore calls have come in directly through 181 call center specifically. So that just shows us the reach of this particular product, that without the call center, as it used to be once upon a time, this was the whole clientele we were missing out on. And with 181, we've been able to reach a much bigger population. And the second part is the web portal. The web portal is again accessed mainly through eMitra's citizen service centers. So these two together, the call center and the eMitra together, have actually ensured more than 90% of the grievances reach our portal. So I wanted to just highlight this part. And then I come to the next part. So that is about Sampark. While Sampark and eMitra together ended up making services accessible to the people of Rajasthan in a way never before, but there was still one small gap that still existed, which is that how do we know who has been selected or who has been made eligible for what? So this is a demand which kept coming from the grassroots, from civil society. And then it was decided to create something called a Jan Suchna portal, which is essentially that all the services that government is providing is available on this portal for anybody to go and see. You can enter your Aadhaar number and get a detail of all the services that are being made available to you or for those which you are eligible for. This essentially came out also in compliance with the RTI Act. As we all know, RTI Act actually mandates self-disclosure by departments. So as a part of that, this was taken up. Digital Dialogue Society was set up in which, and all the departments were made a part of it, and all of them were asked to submit what are the voluntary information that they can disclose. And this portal became again the one-stop shop for that. So this, the discussion on this started around January 2019, and by February 2020, we already had this portal in place. And what I want to highlight here is its outreach. So we've had more than 15 crore people who have visited this particular portal, and people typically go here. One of the best features of this portal is that I can go, put in my Aadhaar number,
give some more details about my background, and get a proper list of all the schemes of government of Rajasthan that I am eligible for and I'm not picking up today. So it's like I do not need to go from one department to the other. So if I want a pension, I go to a social welfare department. If I want education scholarship, I go to education department. Instead of doing that, I simply have to go here and it will tell me which are the schemes I'm eligible for, and then I can access and apply for those schemes right from this portal itself. That has been one of the biggest successes of this portal. And another feature has been that people can actually access what are the services they are eligible for and whether they are getting it or not. A typical case, and this has been used a maximum for ration. So PDS dealers often are known, for instance, to, if somebody goes there to their shop, they say, ki nahi, aapka ration nahi hai, you're not eligible. Then they come to Jan Suchna, they come and they put their Aadhaar number and then they check. And if the portal says they're eligible, they take a printout, they go to the fair price shop dealer, and then he has no face and he cannot tell them that they're not entitled anymore. And then he has been forced to give them this ration. And there are many case studies like this that we have collected over the last 2-3 years. So the access count, the information access counter, the example which I gave of PDS, more than 26 crore people have actually downloaded information from this portal. So this is the way forward slide is what I want to end with, but I think in the entire presentation, this would be my most important slide. While we have done all of this, what next? What next is the question, why do people still have to reach out to the government? A government in a democracy, a welfare-oriented government should be in a position to provide things without people having to come and reach out and apply for things. With that idea, and that idea actually, can you click on this Swata button? There's a link there. Swata pe click karenge. So with that idea and the fact that we have like I mentioned, a full repository of all the families that live in the state of Rajasthan, we have a 98% coverage by the name of Jan Aadhaar. We want to now automate things. But before I talk about that, I want to give a snapshot of Jan Aadhaar. Today, more than 70 plus departments, DBT is being done because we have this database. And this is a database which actually, if you look at it, you don't even need census anymore because every single family's dynamic real-time data is uploaded here. And we have already done DBT transactions of over 140 crores using this particular information. And like I mentioned, we have 98% coverage and we have over 60 fields. And this is dynamic in the sense that people can go even today, every day, they can keep updating. Further, if there is a birth or death in the family, the birth-death registration portal is also linked to this. So every time there is a birth certificate generated, it automatically updates our Jan Aadhaar database. Can you go back? Just click on that arrow. So given that we have this, and we have the Jan Suchna portal where a person already can easily access whatever eligibility they have, our next step is that the day a person becomes eligible for anything, to automatically trigger sanctions for those schemes. So for instance, if somebody is born in my family today and I get a birth registration done, the Jan Aadhaar portal already has my domicile, it knows where I live, it knows my community, and automatically it should and it will trigger domicile certificate. It will automatically trigger caste certificate and make it available in a DigiLocker. Similarly, if I'm eligible for, if I'm for instance in Rajasthan, old age pension for a lady starts at the age of 55. The day as per my date of birth record in Jan Aadhaar, the day I turn 55, that very next day, automatically we will start pushing pension to that particular beneficiary's account without that person having to apply for it. So our next goal, our way forward, is to do away with the need for people to reach out to us and ask us, to come to us and request us or apply to us for any particular service, but we make it their right and make it available to them from the very day that they are eligible for it. That is our dream. And we've already started working on this, and hopefully within the next 4-5 months, this should be rolled out. And the second important thing is, while we have Sampark as a place where people can reach out to us, again, why wait for a service that should have been delivered to not be delivered and the person to realize it's not delivered and then come to us? So for instance, if somebody needs an electricity connection and the number of days within which the connection should be released is say 30 days, automatically the next version of Sampark that we are working on is that when the person applies on the electricity department portal for an electricity connection,
it automatically links back to Sampark, and within 30 days, if that connection is not issued, Sampark will raise its tickets automatically without the person coming and complaining about it. And then that will become a using the monitoring aspect of Sampark, that will become a very, very powerful tool for all of us to know what is the actual time being taken, the status of disposal of services across various departments. So these are the two big ticket reforms in service delivery that we are working on in the Department of IT. And the third is also that to further increase our reach, to improve the penetration, we want to also be able to provide e-Jan Sunwai module so that people can connect from their homes to all the government officials wherever they are seated. So that's it from our side. Thank you very much. Thank you, Anandi, for this excellent presentation. You beautifully explained how we are dealing with public grievances in Rajasthan and the way forward in which we are moving to Swatah and auto generation of grievances. I would also request you to have a look at CP Gram's AI use of artificial intelligence in dealing with the grievances. You, along with your team and myself, can go to Delhi and visit Sir's office and see what we can do, because we are also in the process of launching Sampark 2.0. So if we can look what best practices is happening in country and other states also, that will help us. Now with this, any questions from anybody in the audience? Sir. With this, now I request Bhagwati to present his views and how he is dealing with public grievances in district and what efforts he has made to make it more effective. Over to you, Bhagwati. Respected Secretary DRBG V. Srinivas sir, respected Principal Secretary AR Alok Gupta sir, respected dignitaries and esteemed participants. First of all, I would like to thank V. Srinivas sir for giving me this opportunity to represent the experience of public grievance redressal in the district. As my previous speaker, Anandi ma'am has covered first part of my presentation about using Rajasthan Sampark portal for public grievance redressal. So I will come directly to the experience of handling grievances in the district. राजस्थान संपर्क पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम जिले में सभी तरह की ग्रीवेंस रिड्रेसल करते हैं। उसके साथ ही जिले में 3 तरह की जन सुनवाइयाँ होती हैं प्रति माह, जिन पर वीसी के माध्यम से हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज जो आलोक सर ही हैं, विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आलोक सर ही हैं और चीफ सेक्रेटरी मैडम भी जुड़ते हैं। तो हम प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई करते हैं, जहां पर कोई भी व्यक्ति पहली बार अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकता है। उनमें वो सभी लोग आते हैं कि उस पंचायत के जो किसी कारण से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है, उनको इनवाइट किया जाता है, या फिर पिछली जन सुनवाई के जो असंतुष्ट केस हैं वो आते हैं। द्वितीय गुरुवार को ब्लॉक लेवल जन सुनवाई होती है जिसमें सारे ब्लॉक लेवल अधिकारी बैठते हैं। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आके पहली बार अपना ग्रीवांस रजिस्टर करा सकता है, या फिर जो पिछली जन सुनवाई है उसमें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो केस उनका दर्ज हुआ था वो अगर रिजेक्ट होता है वो अपना आके केस रिप्रेजेंट करता है, उसकी सुनवाई होती है। और जो ऑनलाइन संपर्क पोर्टल पर दर्ज केसेस हैं उनकी सुनवाई वहाँ पर होती है। और तृतीय गुरुवार को जिला स्तर पर जन सुनवाई होती है जिसमें सारे जिला स्तरीय अधिकारी बैठते हैं। उसमें सभी तरह के संपर्क पोर्टल पर जो असंतुष्ट केस होते हैं वो सभी आते हैं, या फिर कोई नया व्यक्ति अपना रजिस्टर कराता है। ये मैम ने अपने प्रेजेंटेशन में कवर कर लिया था, इसलिए मैं रिपीटेशन नहीं करूंगा सारी फीचर्स के संपर्क पोर्टल के। इसमें मैं सीधे ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रोल पे जाऊंगा। राजस्थान संपर्क पोर्टल हमारे पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और L1, L2, L3, L4 ऑफिसर्स हैं। सिटीजन का फीडबैक हम लेते हैं, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल मेजर करते हैं। ये पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हम बात करें सिटीजन कितना हैप्पी है, क्या हमारे सिस्टम से कितना खुश है, हम उसको कितना डिलीवर कर पा रहे हैं, हम कितना उनको रिलीफ दे पा रहे हैं और किन को रिलीफ नहीं दे पा रहे। जिनको हम बता रहे हैं डिपार्टमेंट कि वी आर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू देम, whether it is really relief or not, the role of district administration is very important in that case. So in our district
every month a review meeting is held with the block level officers and district level officers. यहाँ पे सरप्राइज एलिमेंट होता है क्योंकि आप सिस्टम में थाउजेंड्स ऑफ रजिस्टर्ड केसेस होते हैं, हर केसेस को पढ़ना संभव नहीं है, और जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं L1 उनके रिस्पॉन्सेस किस तरह से दिए होते हैं हर को रिव्यू करना संभव नहीं हो पाता है, तो उसमें रैंडमनेस होती है। पूरी VC में अलग अलग डिपार्टमेंट के कुछ केसेस छांटे जाते हैं, रैंडमनेस में हम रिस्पॉन्स पढ़ते हैं कि सिटीजन की ग्रीवांस पर रिस्पॉन्स किस तरह से दिया है डिपार्टमेंट ने। वो रिस्पॉन्स में बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती हैं, बहुत सारी जगह उनको फ्लिम्सी ग्राउंड पर रिजेक्ट किया जाता है, फ्लिम्सी ग्राउंड पर बता दिया जाता है कि हम रिलीफ दे दी, तो वो जब पकड़ में आते हैं तो हर कोई अलर्ट हो जाता है कि हमें आगे से खुद जवाब देना है, क्योंकि L1, L2, L3, L4 ऑफिसर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट नहीं कर सकते, उनके बिहाफ पर कोई क्लर्क, LDC या उनका PA रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, उनको खुद को रिस्पॉन्ड करना होता है, क्योंकि जो ग्रीवांस रजिस्टर्ड होती है खुद को मैसेज जाता है और खुद को ही अपनी SSO ID से उसका आंसर रिस्पॉन्स देना होता है। तो एक ये सरप्राइज एलिमेंट है जिसमें हमेशा सबको डर रहता है कि किसी भी समय किसी का भी नंबर आ सकता है। जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, सिटीजन को जवाब देते हैं, वो उसमें सब्सटेंशियल ग्राउंड पर रिलीफ या रिजेक्शन होना चाहिए। सेकेंड, अगर हमें दिखता है कि उस केस में किसी ने अच्छे से जवाब नहीं दिया है या फिर दो विभागों के बीच की बात है, उसमें कोऑर्डिनेट करते हैं। थर्ड एक एलिमेंट है कि जो रिलीफ केसेस दिखाए गए हैं कि विभाग कहता है कि हमने इसको मदद कर दी है, इसका केस डिस्पोज कर दिया, हम उसको फील्ड वेरीफाई कराते हैं। रैंडमली सिलेक्टेड हर SDO से 10 केसेस एवरी मंथ हम उनको वेरीफाई कराते हैं कि जहाँ पे डिपार्टमेंट कहता है कि रिलीफ दे दिया है, लेकिन व्यक्ति कहता है, कंप्लेनेंट कहता है कि मुझे रिलीफ नहीं मिला है, डिपार्टमेंट के लोग झूठ बोल रहे हैं। दूसरा कराते हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है और वो व्यक्ति भी असंतुष्ट है, उस केस में भी 10 केसेस हम वेरीफाई कराते हैं क्या डिपार्टमेंट सही कह रहा है या कंप्लेनेंट सही कह रहा है, और उसमें फिर हमें जो इरेगुलरिटीज मिलती हैं उसके आधार पर हम उनको कुछ केसेस को हम विजिलेंस कमेटी में लेते हैं। हर महीने में एक बार विजिलेंस कमेटी की बैठक होती है जिसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, MP भी होते हैं, ऑनरेबल MPs भी होते हैं, ऑनरेबल MLAs भी होते हैं, जिला प्रमुख भी होते हैं और बाकी सारे विभाग के अधिकारी होते हैं। उसका काम यह है कि अगर किसी अधिकारी ने ऐसा जवाब दिया है जिसमें कोई न कोई इरेगुलरिटीज का मैटर है, सही से जवाब नहीं दिया, उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकें। और जहां हमें लगता है कि विभाग ने गलत जवाब दिया है, जानबूझकर गलत जवाब दिया है, उसके खिलाफ हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है जहां पर आपके पास एक सिस्टम है, पूरा राजस्थान संपर्क पोर्टल का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एक वो प्लेटफॉर्म अपने आप में मैकेनाइज तरीके से वर्क करता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट किस तरह से करना है, ये छोटे छोटे इनिशिएटिव पिछले 2 जिले के अनुभव के आधार पर जो सेटिस्फेक्शन है सिटीजन का, इसमें सिरोही का भी है जहाँ मेरे ज्वाइनिंग से पहले, और बीकानेर का भी जहाँ मैं भी काम कर रहा हूँ। तो देखेंगे कि रिलीफ परसेंटेज बिना डिक्रीज हुए जो सेटिस्फेक्शन है, जिसमें विभाग कहता है कि रिलीफ हमने दिया है, तो सेटिस्फेक्शन बढ़ा है। जैसे सिरोही में था 65 से हम 80 पे ले गए, बीकानेर में था 59 से उसको 73 पे ले गए। ग्रीवेंस रिड्रेसल जो ऐसा है सब्जेक्ट है, कभी एंड नहीं होगा, हमेशा रहेगा। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति, हर सिटीजन उसको जैसे प्राइवेट कंपनी कस्टमर की तरह ट्रीट करती, हम भी उसको कस्टमर सेंट्रिक हो, सर्विस दे पाए और उनको ये फील करा पाए कि आप गवर्नेंस के इंटीग्रल पार्ट हैं, आपकी कंप्लेंट बहुत महत्वपूर्ण है और आपको उचित जवाब मिलना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य है कि उसको 100% तक अचीव करें। रेगुलर स्कोप रहेगा इम्प्रूवमेंट के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा इस तरह से काम करते हैं ताकि सिस्टम अपने आप ये पहचान ले अगर कोई ग्रीवांस आई है उसको कहीं से खिसकाना नहीं है, अनावश्यक कारण से रिजेक्ट नहीं करना है। 3 एग्जाम्पल्स है जस्ट एनेक्डोट्स बीकानेर से। एक मिस्टर जेठाराम थे, ये उनकी रिको में ज़मीन एक्वायरी हुई थी 1993 में और उनके 12 लाख रुपए लगभग तब से बकाया थे। इनका एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था, उस समय पैसे जमा नहीं करा पाए। 2017 में डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया, कोर्ट ने जजमेंट कर लिया। अब ये लगातार अपनी कंप्लेंट कर रहे थे संपर्क पर कि मुझे पैसे नहीं मिले हैं। उसमें 2 डिपार्टमेंट थे, रिको जिन्होंने पैसे दिए थे, एक काला जो कंप्लेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन होते हैं, SD होते हैं नॉर्मली। तो रिको ने पैसे दे दिए, उनके पास उतना ही रिकॉर्ड था, हमने पैसे काला को दे दिए। काला ने बैंकर्स चेक इशू किया था, उसके पास उतना रिकॉर्ड था, बैंकर चेक हमने इशू कर दिए। वो पेमेंट हुआ या नहीं हुआ वो किसी को पता नहीं था। संपर्क पोर्टल पे आया, दोनों ने अपने अपने वर्जन बता दिए कि पैसे हमने दे दिए, उन्होंने कहा हमने बैंकर्स चेक दे दिए। ये संपर्क में रिजेक्ट हो गई।
रिजेक्ट होने के बाद वो सिटीजन डिससेटिस्फाइड हुआ और फिर वो जन सुनवाई जो होती है जिला स्तर की, उन पे आए वो कि सर आपके विभाग, 2 विभागों ने मुझे जवाब दिया, मेरे पैसे बकाया। तो उसमें हमने सर्च करवाया, सर्च टीम बनाई, सबका आया कि रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं, पैसे गए या नहीं गए, वी डोंट नो, वी आर नॉट श्योर वेदर वी हैव गिवन मनी टू हिम और नॉट। उसके बाद एक बैंक को थर्ड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज है उसको हमने विजिलेंस में लिया, फिर बैंक को इन्वॉल्व किया। इनिशियली ये जो चेक था वो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का था, तो उसमें मर्ज होने के बाद एसबीआई हो गया, तो बैंक ने भी एक बार हाथ खड़े कर दिए। फिर फाइनली ये तय हुआ कि आपके रिकॉर्ड जो कॉर्पोरेट ऑफिस है मुंबई से वहाँ से पता किया जाए। तो इनिशियली वहाँ से जवाब आया हमारे पास इतना पुराना रिकॉर्ड नहीं है, रिक्वेस्ट किया गया, फाइनली दे सर्च पुराना रिकॉर्ड इतने साल पहले बैंकर्स चेक हुए थे और वो लिक्विडेट नहीं हुए थे, वहाँ से रिटर्न में आ गया, कितने सालों बाद उसको पैसा मिला। तो ये जस्ट ये शो करता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से सब चीज़ों को हैंडल करेगा तो डाउन द लाइन ये मैसेज क्लियर हो जाता है कि ग्रीवांस को इधर से उधर भटकाना नहीं है, हमें अल्टीमेटली जवाब देना पड़ेगा। ये सेकंड केस है पट्टे इशू का। ललिता विज है, 1960 में इनके पिताजी ने गिफ्ट डीड की थी इनको और इन्होंने पट्टा बनाने के लिए अभी आवेदन किया था, अभी प्रशासन शहरों के संग चला था। उस समय उनके ब्रदर्स भी थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि पिताजी ने उन्होंने गिफ्ट डीड नहीं की है, इनके पास गिफ्ट डीड ये ठीक नहीं है। कारण भी था उसका, गिफ्ट डीड पे पानी गिर गया था, 1960 की गिफ्ट डीड थी, सारे लेटर्स ब्लर हो गए थे। वो गिफ्ट डीड कैसे वैलिड, कैसे ढूंढवाएंगे? तो एक बार पहले उस समय यूआईटी से उनको अलर्ट हुआ था, सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट था 1960s में, उसमें ढूंढवाया, वहां नहीं मिला। फिर उनकी कॉपी निकलवाने के प्रयास की गिफ्ट डीड की, वो नहीं मिली। फिर लास्टली फाइनली सब जगह से ना आया, एक सर्च नोट इशू किया और डीआईजी रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ऑफिस में एक पुराना रजिस्टर मिला जहाँ पे वो गिफ्ट डीड जिस डेट में हुई थी उसका अंकन था। फाइनली इतने सालों बाद जाके उनको पट्टा मिल पाया। थर्ड केस है खाजूवाला का, एक लेडी थी, उनका ही पट्टे का इशू था। उसमें उन्होंने पट्टे के लिए अप्लाई किया तो उनके घर के आसपास के दोनों घर ग्राम पंचायत की भूमि में आते थे, आबादी लैंड में, दोनों को पट्टा इशू था। इन लेडी का कहना था कि मेरा पट्टा भी ग्राम पंचायत इशू करेगी, क्यों नहीं कर रही है? जब लैंड को मेजर कराया, ग्राम पंचायत ने कहा हमारी लैंड नहीं है। मंडी ने कराया, मंडी ने कहा ये हमारी लैंड है। उसके बाद हमने शुरू किया प्रोसेस कि इसको मंडी से अलॉट कराया जाए। तो बीच में ग्राम पंचायत नगर पालिका बन गई। नगर पालिका बनने के कारण पूरा प्रोसेस चेंज हो गया और उनका पट्टा बनने लगभग 1.5 साल ये इशू चलता रहा। ये सारे वो केस हैं जो संपर्क पोर्टल पर आए थे, जो डिससेटिस्फाइड थे, जो थर्ड टियर की जो हियरिंग होती है उसमें लोग आए, उसको टेकअप किया गया। उसके बाद 1.5 साल तक ये इशू चला और गवर्नमेंट से हमने फॉलोअप किया। फाइनली मंत्री जी ने 25 बीघा लैंड जो थी जहाँ पर स्केटर्ड हैबिटेशन बसा हुआ था वो नगर पालिका को दे दी, इनको पट्टा मिल गया। तो इस तरह से राजस्थान में पब्लिक ग्रीवेंस को हैंडल किया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए 3 टियर हियरिंग सिस्टम है और जहाँ पे भी डिससेटिस्फेक्शन होता है वहाँ पर उसको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनके केस को करने के लिए। और जहाँ हमें लगता है कि अधिकारी जो हैं पब्लिक ग्रीवेंस को अच्छे से नहीं ले रहे हैं या फिर गलत जवाब दे रहे हैं, तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। इस तरीके से ही सिटीजन का सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको हम बढ़ाते हैं। मेरा प्रेजेंटेशन का पहला पार्ट जो था मैम ने कवर कर लिया था, तो डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे उतना ही सबमिट करना था। मैं फिर से एक बार डीआरपीजी स्पेशली वी श्रीनिवास सर को धन्यवाद देना चाहूँगा ये अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भगवती, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि डिस्पोजल और रिड्रेसल में क्या अंतर है। सिर्फ निस्तारण नहीं होना चाहिए, समस्या का निवारण भी होना चाहिए। आज अगर हम बात करें हमारे संपर्क पोर्टल की तो हमारा डिस्पोजल 97% से भी ऊपर है, लेकिन जब हम बात करते हैं सेटिस्फेक्शन की, इसी 66% ओनली। आपने बताया कि आपने बीकानेर जिले में और सिरोही में आपने कैसे से इम्प्रूव किया, तो डेफिनेटली हमारे ऑफिसर्स को जो है नॉट ओनली टेक्नोलॉजी पे भरोसा रखना चाहिए बल्कि ह्यूमन टच के साथ उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करने के साथ साथ इसको रिड्रेसल पे ध्यान देना चाहिए, तभी जो हमारा ये पोर्टल है और इफेक्टिवली काम करेगा। एंड आई एम श्योर विद सर्स एक्सपीरियंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी कैन डू इट मोर इफेक्टिव। थैंक यू। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू वेरी मच।
Bhagwati Prasad's work was one of the outstanding presentations that we heard in the Empowered Committee before Cabinet Secretary, and that is the reason why we called him for this webinar. And along with Krishna Bhaskar, who got the award for root cause analysis, and Sanpun Sok had introduced village level doorstep delivery of services and grievance redressal. And Bhagwati's work of increasing satisfaction was a very highly rated innovation. I think there's a lot of learning from his work. Of course, Jan Sampark, we will discuss with you. You're invited, and we'll sit down half a day with you and share our thoughts. बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मेमेंटो प्रेजेंटेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रगति आसोपा को। मेमेंटो to Alok Gupta ji, Principal Secretary, श्रीमती सुरभि सिंह सहायक निदेशक CGG पुष्प मेमेंटो प्रेजेंट करेंगी नेहा गिरी जी को और श्रीमती आनंदी को। मेमेंटो टू आनंदी। श्रीमती विनोद कुमारी लेखाधिकारी मेमेंटो प्रेजेंट करेंगी श्री भगवती प्रसाद कलाल को, जिला कलेक्टर बीकानेर। So all our sessions have ended, and now we'll be moving towards the valedictory session. Due to the shortage of time, we have to cancel the last session. So now we'll. I was told that we're not taking it up. Okay. Okay, Government of Telangana. We have Mr. Pendiala T. Srinivas. On the dais. Joint Director, Igor. And I'd request Pragati ji to please come and present a bouquet to him. So Pendiala Srinivas ji, you can begin your presentation. Good afternoon, one and all. Respected V. Srinivas, Secretary, DARPG sir, and Principal Secretary, IT Department, Rajasthan, and all the dignitaries and participants in the workshop conference. I welcome you all for the event, and I am Srinivas Pendiala from Government of Telangana, working as Joint Director in Information Technology and Electronics and Communications Department. I look after the e-governance initiatives in the Telangana state. We have different verticals which are working, and basically we have emerging technologies which are implemented in the Government of Telangana in various departments. The use cases which are implemented by using artificial intelligence, big data, machine learning, facial recognition, and DL. These are the different 4 use cases which are implemented in the departments I would like to cover. Before starting the entire presentation, I would like to give some introduction about the implementation of IT-enabled services in Telangana state. All the departments have initiated their services through IT-enabled services, and each department has their own servers, databases separately allocated. All of them are brought onto a single platform called MeSeva 2.0, and earlier it was called as MeSeva and eSeva, which was merged with the emerging technologies and
implemented, and it is initiated as Mi Seva 2.0 in 2017, and which was implemented successfully from 2017. In continuation to that portal, Mi Seva 2.0, we have also initiated M-governance initiatives. Like the experience of Telangana, I would like to take it forward. And the 4 important emerging technologies which are used by using blockchain, AI, FR, facial recognition are implemented in Road Transport Authority, pensions, and which is successfully implemented right from 2019 onwards. And there is one education department and elections department. These are the 4 departments which we have implemented various emerging technologies. This is M-governance, AI implementation, and 2020 is taken as AI implementation in Telangana state. Continue. I'm explaining about the agenda. What are the issues which were taken, and in the manual process, what are the issues which are taken up has been listed out over here. They are all common. How the citizen is getting the service delivery in Mi Seva 2.0, and 4 scenarios which are taken from the department which I have taken, and how they can be re-engineered. This is what we have done. How latest technologies are implemented for big league of the entire implementation of emerging technology. Actually, in manual process, we have the issues of physical presence, jurisdiction-specific office, contact with bureaucracy and discretion, filing of paper forms, and during office hours only it will be possible. But what we would like to achieve is it should be presence-less, jurisdiction-free, contactless, no discretion, and paperless, as well as anytime, anywhere it has to be delivered. These are the main points which we have achieved. And the process of transport department, how the citizen approaches the for issuance of any license, he will be approaching submitting manual documentation. I am skipping the process, you are well aware in manual process. And in pension disbursement, the pensioner has to approach 3 different offices: sub-treasury office, or bank of the pensioner, or Mi Seva center, where he has to submit the life certificate every 6 months or 1 year in the month of November. That has to be removed. There are 3 lakh pensioners in Telangana. How we have implemented, I will explain. And the other one is registration of degree college students, and how they have to register online for getting the admissions in the engineering degree colleges. The 4th one is all these 3 departments, as well as e-voting system is also we have studied through facial recognition. This is similar to the platform in Estonia, Germany. We have studied across it, and how to implement is taken into consideration. And we have achieved with a solution called, this is one more, then mainly 3 manual checks are to be performed. That is, one, name of the application in the form on the ID card, and photograph in the application with the photo ID card, and an indirect check of the looking at the person present. These are the 3 main activities which are to be performed, which is being cross-verified with the big data available in the Telangana State Data Center. These are identified with the help of the technologies used are artificial intelligence, machine learning, deep learning, and big data. And we have come across with real-time digital authentication of identity through RTDA, and which was developed and implemented. And this is similar to Utopian government, which is implemented in Estonia. The 3-factor authentication, which is taken into consideration, is use live photograph of the citizen and compare with the database available, which is AI-based liveness check, the first one. And the second one is captured photograph image fetched from the database of the previous records which are available. Like if a person is giving a selfie, the selfie taken will be compared with the driving license or college information wherever his photograph is captured. Like this,
all the data in the big data which is available will be compared, and the captured photograph will be tested with the deep learning technology, and image comparison will be done. And the third one is demographic verification of the citizen with the big data available will be compared. When all these three checks are performed, then when these three checks are successful, the activity of the request received from the citizen will be completed. So all these services are being delivered through mobile, which is called as TIAP Folio, which is a mobile M-governance initiative by Telangana state. Now, all the 3-4 services which we have covered, I'll play the video in the end. Last में बताएंगे आप. This is in RTA department. The services delivered are called as friendly electronic services in transport department, which is launched in 2020. The manual process, and these are the licenses which can be issued online and which can be downloaded through online from mobile also. And we have even done, this is called as FES services, complied with NESDA 2021 too. And this is the driving license which you can download through the mobile. And it will be sent as SMS and as well as email also to the citizen. This is a renewal of driving license, how it is implemented, which is the second one is pensioners life certificate through selfie. Earlier, it's a manual system we used to go, and later it is biometric. We have introduced selfie-based pension disbursement. Directly, the pension will go to the pensioner's account, and rather than removing all these 3 steps, 1, 2, 3, the citizen need not have to go to the offices, and the process flow is given. And the comparative study, how we are doing for a pensioner, what he is submitted details are on the top photograph. The base details which were taken from RTA or any other database which is available is compared, and after that, and it will be liveness matched and demographics are matched and photo is matched. These are the 3 checks performed. Then the green tick will come. He is eligible for pension. This is the test which we have done. And this is the digital life certificate for the financial year, which will be sent through SMS and email to the citizen. And the video I'll be playing later. And for voter identification during elections in 2020, we have taken 3,000 voters constituency, and we have implemented facial recognition and identification of the citizens through facial recognition as per the records which are available previously submitted. The unique number, and one citizen has to cast the vote once only. This is what the important session which we have taken. And the comparison done in 2020 votes is, the top one is municipal elections, the photograph. The base photograph is given on the left side, results from voter database. And the other one is the right side also, again, the voter identity checked with the facial recognition matched with the database which is available. Like this, these are the manual process in electioneering campaign done in specific constituency for 3,000 voters. Manual process and manual discretion, no digital trail. These are the current identification process being done. The re-engineering identification is mobile application, facial recognition, and digital trail is taken into consideration for implementation. Like some examples of facial recognition, what are the photographs are given. We have shown matched photographs and not matched photographs are also there. The percentage of matching is also given. And e-voting system is implemented on par with Germany, Estonia, how they have implemented, that is taken into consideration. Then these are the activities which we have done in e-voting. When the applications are launched are given. Then these applications can be replicated across the states which we have presented it to the Government of India. This can be used in passport services, and renewal, change of address, and additional booklet can be taken for passports. And the State Transport Department of any state can use this application for renewal of licenses, issuance of license, permit services. Then
For a pensioner also, what I have explained, this can be implemented basing on the database availability. Then we have even suggested to UIDA to use the name-based search options which are taken by Government of Telangana based on the fields available in the Government of Telangana database, with which the benefits of RTDI is successfully implemented in Government of Telangana, which is presence-less, jurisdiction-free, contactless, paperless, anytime, anywhere, the services can be availed. And we are also trying to implement these in flagship programs in agriculture, other departmental activities too. The results of analysis for facial recognition, various names and photographs are given, like input name, what is the base name, which is matched and which are not matched also given over here. I'll read out only one name. The first one is K. Asirvadam on the input name on the left side. The base name is Asirvadam, which is recognized. Whatever the form it is written, it will recognize. In the name variations which did not match is Kashir Hashmi. This is the left name which is input name. Base name is Syed Kaisar Hashmi. So it did not match. Like this, we have database verification which is called as Samagra Vedika, where we are comparing this not with the basis of Aadhaar number at all. We have taken 18 fields which are compared, with which we are comparing the base names also. Next, variation in photos I will show you. The image on the top one is similarity of 98.196. Image input is there and base input is there. And in the similar fashion, 4 photographs, the similarity is 93, 99, 98.196%. These are matched photographs of the existing database. And variations in photos, different persons rejected by the system is also taken. Like this, the similarity between input image is on the left side, right side is base image, which is 35.113, which were not matched. Like this, different photographs are there. Same persons could not be identified by the system. These are the different photographs which are taken. Like this, using the emerging technologies, how we have studied, we have presented over here. Thank you for the opportunity for presenting this thing. I'll play a video, please, which is self-explanatory. Year after year, Telangana has been adjudged as the leading e-governed state in India by many agencies. As per e-Tal of Government of India, Telangana ranks first in number of per capita e-transactions. What has been setting Telangana apart from its peers is the vision of a truly digital Telangana and its execution under the leadership of Honorable Chief Minister Shri K. Chandrasekhar Rao. Striving towards this vision, Telangana has started exploring use of emerging technologies such as artificial intelligence, machine learning, deep learning, big data, blockchain, drones, etc. in the government. Authentication of citizens' identity is a key prerequisite of service delivery by government departments. For example, at airports, security personnel verify the identity of a citizen before allowing them to enter the airport. At examination halls, the identity of students is verified before they are allowed to take the exam. Similarly, identity is verified at temples and during voting, etc. These examples of identity authentication essentially include 3 checks which are performed manually. First, name on the flight ticket or hall ticket with the name on the ID card. Second, photograph on the ID card with the face of the citizen. Third, which is an indirect check. This includes physically verifying the live person. Let's take the case of pensioners. Pensioners are required to submit a life certificate once in a year. At present, the pensioners submit life certificate by visiting one of the following offices: Sub-Treasury Office, Bank of the Pensioner, and Me Seva Center. All of these modes are marred with various challenges, such as need of physical presence at a specific location, issues like worn-out fingerprints in elders. DoIT&C, Department of Government of Telangana, has, after intense analysis,
answered these questions through an innovative solution called Real-Time Digital Authentication of Identity, RTDAI, for an easy and convenient authentication of citizens' identity for efficient delivery of G2C services through a smartphone. Built on RTDAI platform, Pensioners Life Certificate through Selfie, PLCS, is a three-factor authentication system which will allow more than 2.6 lakhs pensioners of Government of Telangana to submit their annual life certificate through a smartphone from their home, anytime, anywhere, without stepping out of home. PLCS service is provided through T-App Folio, the M-Governance initiative of Government of Telangana. The only details to be provided by pensioners are pension ID, their name, and take a selfie. PLCS processes the provided information using a three-factor authentication by leveraging state-of-the-art technologies. Artificial intelligence-based liveness check to ensure that selfie uploaded is from a live person at that instant and not a photograph or a selfie taken earlier. This is the most important test since the identification is done remotely. Big data-based demographic check to match names. The technology can handle variation in names. Deep learning-based image comparison to match photographs. The technology can handle variation in the photos. Since its launch in April 2019, as on date, more than 26,000 pensioners, about 10% of pensioner base, have submitted their life certificate through PLCS. PLCS has demonstrated an accuracy of about 93% in successfully authenticating the pensioners. RTDAI has immense potential for government departments. For example, it can enable authentication of pensioners of old age and other welfare pension schemes. RTDAI can help the Election Commission identify and eliminate duplicate voter IDs to achieve one citizen, one voter ID anywhere in the country. State Election Commission of Telangana is planning for a pilot of RTDAI-based authentication in some polling booths in the upcoming municipal elections in January 2020. In case of Transport Department, RTDAI can remove the requirement of physical presence of citizens at RTA offices for some of the services like renewal of driving license, changing address in DL or RC, adding a class of new vehicle to the existing DL, etc. The biggest advantage of RTDAI is that it requires just a smartphone with no requirement of any other hardware. Given the availability of more than 400 million smartphones in India, a solution like RTDAI has the potential for large-scale implementation on a cost-effective basis. Telangana is the first state in the country to build this kind of platform, which leverages artificial intelligence, deep learning, and big data. Thank you for the opportunity given by Secretary DARPG. I thank you one and all. Sir, please wait. Yeah, we'll be presenting a memento to you. And for that, I'd like to invite Dr. Preeti Singh Pamar, Additional Director, REPA, to present a memento to Pendyala Srinivas, Joint Director, EGO, Information Technology, Electronics and Communication Department, Government of Telangana. Thank you so much. And now we'll be moving towards the valedictory session. So let's set the days. In a few moments, we'll be setting the days, and our dignitaries will be coming on the days. And I would like to inform you one thing, that we have a state-of-art data center across the building, across this building, that is RIC. So those interested can walk up to that place at 2 p.m. and take a look. So finally, after 8 engrossing, interesting, informative, enlightening, illuminating sessions, we have come to the closing part of the 2 days regional conference on good governance. And for the valedictory session, we have the honorable people on the dignitaries on the days. We have Secretary DARPG GOI V. Srinivas, Joint Secretary DARPG GOI
NBS Rajput, Principal Secretary AR, GO Rajasthan, Alok Gupta ji, and DG RIPA Naveen Mahajan ji. First of all, let's give a floral welcome to our dignitaries on the dais, and I humbly request. Okay. Right. So straight away, I'll invite Sri Naveen Mahajan ji, DG RIPA, to present his words of wisdom. Respected Mr. V. Srinivas, Secretary, Government of India, Department of Administrative Reform, my esteemed colleague Alok Gupta, Principal Secretary, Department of Administrative Reforms, Rajasthan Government, Mr. NBS Rajput, who is Joint Secretary in Department of Administrative Reforms, Government of India, and all the esteemed delegates. So all good things, they finally come to an end, and so has the regional conference on good governance. I think when me and Alok were asked to shoulder the responsibility of conducting this regional conference in Jaipur, we were quite excited, quite enthusiastic. In fact, Alok ji, he had attended one such conference in Madhya Pradesh, and he had a prior experience of how to go about it. But once we went into the nuts and bolts of tying up the logistics, it turned out to be quite a mammoth task, a quite challenging one. But we thoroughly enjoyed the entire exercise. I hope most of the delegates who turned up from different parts of the country. In fact, looking at the profile of delegates, I find participants from more than a dozen states. So in that context specifically, it's hardly a regional conference. It becomes more of a national conference. The concluding speaker was a gentleman from Telangana, and there were speakers from all parts of the country, from Arunachal, all these PM awardees. So even though semantic-wise it's been called a regional conference, but looking at the participant profile, looking at the session participants, I think it was on a much broader canvas. Also, it's a very healthy platform, I must say, wherein young officers, they get to showcase what all they did during their field assignments, put before everybody their initiatives which fetch them felicitation at the national level, and then some sort of a cross learning for everybody to take home. So that is a fundamental purpose of these kind of conferences. I hope Jaipur lived up to its hospitality standards. Even if there were any hiccups or some hassles anywhere during the logistical exercise, I hope it will be overlooked. We look forward to hosting such conferences in the future also, and all these kit bags. So as you suggested, we have pen drives where all the PPTs of all the participants, they've been loaded over them. In case any particular PPT is missing, we'll try to figure it out, and we'll have a soft copy emailed to you by the time you reach your destination. So with this,
I thank Mr. Srinivas for giving us a chance to host this key conference. And I hope by the time all of us leave, we'll be much more positive in our outlooks, having much more zeal to deliver in the field. And there are very important takeaways from this conference. Thank you. Thank you so much, sir. Every activity, every event is an experience. The external fades away and the internal lingers on and echoes in the depth of our hearts. So I hope you're carrying so much in your hearts from Jaipur. I'd now like to invite Shri Alok Gupta, Principal Secretary, Administrative Reforms and Coordination, Public Grievance Redressal, Government of Rajasthan, for his address. गुड गवर्नेंस पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित श्री श्रीनिवास सर, मेरे साथी नवीन महाजन, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का पूरा जिम्मा उठाया और उसे सक्सेसफुल निभाया भी, श्री राजपूत जी और यहाँ उपस्थित सभी डेलीगेट्स, आप सब ने इस 2 दिवसीय कार्यशाला के लिए अपना कीमती समय दिया और काफ़ी अहम मुद्दों पर जो प्रेजेंटेशंस हुई, सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टियों के साथ जो सुझाव मिले, इससे निश्चित रूप से ही गुड गवर्नेंस की दिशा में हमें एक नया मार्ग मिलेगा और हम सभी लोगों ने जरूर इससे कुछ न कुछ सीखा होगा। गुड गवर्नेंस एक ऐसा विषय है जो न केवल हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है, बल्कि इस पर निरंतर रिसर्च, अनुसंधान और डायलॉग की आवश्यकता है। और इस समय इस डायलॉग के लिए ये कॉन्फ्रेंस जो है एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलता है, जहाँ पर पूरे देश के अंदर से जो नए नवाचार हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, हमको जानने का मौका मिलता है और सीखने का मौका मिलता है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने भी गुड गवर्नेंस के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं और कुछ हमारे इनिशिएटिव जो हैं हमने इस कॉन्फ्रेंस में आपको यहाँ शोकेस भी किए थे। राजस्थान गुड गवर्नेंस के लिए एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया है और इससे आम जन का जो जीवन है बहुत सुगम और सरल भी हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री का जो ध्येय वाक्य है, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन को करने के लिए एक संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ये कार्यशाला, ये कॉन्फ्रेंस जो है इस संकल्प को और मजबूती से आगे बढ़ाने में हमें सहायक सिद्ध होगी। मैं श्रीनिवास सर का और DARPG का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के लिए जयपुर का चयन किया और हमें एक अवसर दिया कि हम इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर सकें। इस आयोजन के लिए मैं श्री नवीन महाजन, DG SCM रीपा और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने लगातार हर छुट्टी के दिन भी काम करते हुए इस महत्वपूर्ण आयोजन को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया और हमारा पूरा सहयोग दिया। मुझे उम्मीद है कि DARPG इस तरह की कॉन्फ्रेंस जो है जो लगातार आयोजित कर रही है और भी आयोजित करेगी और जयपुर को एक और कॉन्फ्रेंस करने का मौका भी मिलेगा और जिससे गुड गवर्नेंस के लिए हम लोग जो है इस राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। मैं पुनः आप सबका आभार, अभिनंदन। थैंक यू। Thank you, sir. Shri V. Srinivas, Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances and Department of Pensions and Pensioners' Welfare in the Ministry of Personal Public Grievances and Pensions. So yeah, he's here. Let me thank HCM Reaper, Director General Naveen Mahajan ji, Alok Gupta ji, and Rajput ji for putting this conference together. Let me also call out some of the officers who have strived tirelessly to make it possible. From behalf of DRPG, let me thank Sister Matthew. Please stand up, Sister ji. A loud hand for her. The Deputy Secretary ARPG, Santosh Kumar, the Under Secretary DRPG, Srimati Vandana Nangia, the Under Secretary DRPG, Rakesh Pal, and please introduce yourself. Suman Malhotra ji. She's just won the award for the Hindi translation also. Thank you. So, this is a small team that came together. I was not to come for this conference. Rajput ji was to lead it. I was to travel somewhere else, and suddenly I was told last Saturday by Rajput ji that you have to come here. And
Then he told me the next one you also have to speak in the inaugural session. So it took me a lot of hard work to put together a statement. Well, listening to PM awardees is always special, and let me thank all the PM awardees who have come. I can see Srimati Chanina Singh is here, and we also heard a lot of them who have participated. Sushant Gaurav, we also heard Abhishek Anand, Nagarajan had come from Gujarat. Then we had Prithviraj from Maharashtra was here, and I think Serish Asgar joined by VC. He joined by VC. Okay. And then today I think we could not hear the two awardees. So we heard out of the 13 awardees, 11 awardees we could hear. And that is quite a large number of presentations that went in. And of course, it's always a pleasure to listen to the Rajasthan presentations. Bhagwati's presentation is always good to hear. Jan Sampark I've heard before, and it always evokes a lot of thoughts. I wanted to hear, but I got caught up with something else. I'm sorry I missed it. I'll go through your presentation. The other ones on Khelo India I had seen before, and Rukmini's I had seen before. Deepan Soni's also I had seen many times in the past. So every time I see the PM awarded presentations, I must have seen them 7-8 times by now since the process started till now. It always evokes a tremendous amount of passion and also inspiring. And I find every time we present it on a national forum, there are more than 2,000 to 3,000 people who join on a web room. Most collectors yesterday, in fact, Additional Chief Secretary Maharashtra texted, I've had Chief Secretary Arunachal texting. A whole lot of them across the country have joined online. Several former Chief Secretaries of Rajasthan texted me saying that we are happy to listen to the deliberations. Several IAPA faculty texted, we are in the group. And I think we are also happy to have our Northeastern colleagues here. From Mizoram, the DGATI has traveled. From Sikkim, the DGATI traveled. Arunachal, of course, had Sunny speaking online. And let me thank all the young probationers who are here. I hope you have benefited from listening to these. It's very aspirational to get a PM award. In fact, it wasn't there when I was a collector. Otherwise, I would have really competed so hard to make it possible. It was created much later. And then when we applied for the award, innovations had only one category. So it didn't have a second category. And I thought my Digital Aims project will get us through, but it went to the GST that year. So one thing we did was we expanded the innovation category to get more awards into it. And Anandi, of course, we heard you with rapt attention. So we'll invite you and Alok to visit Delhi and see the AI-enabled intelligent grievance monitoring system anytime. And we also please bring Mr. G.L. Sharma along. He's been working on it for a long time. So let me also thank the HCM REPA faculty. Professor Rakesh Singhal, whom I have known since the age of 22. Please stand up, a big cheer for you. And of course, the Special Secretary AR is missing. She's not here. Mrs. Kuntal has left. Okay, she's left for Delhi. But our gratitude to her, senior professors and faculty. I'll be meeting you separately in the afternoon to thank each one of you for your contribution. But all of you who are here, we'd like to clap for you to rise. Please stand up. Big thanks for all the HCM REPA faculty. Without you, it was not possible. And also all thanks to all the delegates. I think it was a roaring success. We had the Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions. Dr. Jiten Singh Ji was very passionate about this event. He came here for a preparatory meeting. Then he came back again for the conference and spoke with great conviction for about 45 minutes yesterday. And I think we've all benefited from his address. I'd also like to thank DG IAPA, who was to travel tonight he was to go to US, but he said, I'll participate in this conference. So he came from Delhi, and also Santosh Mishra was traveling to US today. He also came in yesterday and participated in the deliberations. And we had Rachna, who's the backbone in terms of running e-office and CP grams being here. And Sanjeev Mathur was also here on pension reforms. And of course, we had PM Gati Shakti. I'm sure you would have been very impressed. Divisha Joshi was here. But every time I saw Gati Shakti, I was amazed by the number of permutations and combinations.
and the algorithm really generates a vast amount of data. So great, congratulations to all of you. We greatly enjoyed being a part of it. If somebody said 2 days of the regional conference, sit through every session, I think this was one conference where I would have sat through every session. Thank you very much, Alokji. Thank you, Naveenji, for making this possible. We'll have a group photograph if it is okay. I'll request HCM REPA faculty to join us on the dais. I'll also request all states who are representing here and DRPG to come on the dais for a joint photograph. Please come.